one is not attending, जो हमारे sales की team है. This is an AMA. So the idea is to let this drive through questions. ठीक है, और इस particular session में हमने काफ़ी इसको broad रखा हुआ है. So allied, you know, we do a lot of IT, but this year we have started to help people not doing IT as well. So अवैस की जो practice proposed है वो legal है, इनकी recruitment की है, फायज़ा की, अनसब की psychology की है, और IT वाले 2-3 लोग हैं, उस्मान जो है accounting को represent कर रहा है. So the idea is that Allied doesn't just help with building an IT team, it can help you with building anything जो services हैं और outsourcing है. This is our basic stay for the Allied framework. ठीक है, so So what we can do is we can go around. On इधर आ जाओ. चेयर है ये जरा टूटी है. आप बैठे. माइक रखा है आपके साथ. So let's just go around quickly ताकि some of you don't know each other. अगर आप बिल्कुल 2 लाइनों में 3 लाइनों में बता दें कि आप कौन हैं और आप किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किस चीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड मे बी इन अ लाइन और टू टेल अस वेयर यू स्टक, व्हाई आरंट यू डूइंग दिस, व्हाई आरंट यू टेकिंग इट फर्दर देन यू आर डूइंग इट. तो अवैस, इफ यू कैन स्टार्ट. Sure, yeah. My name is Aves. I'm a lawyer. I have my own practice, and almost a year ago we decided to kind of expand into the outsourcing space. So right now we're looking into providing outsourcing services to solicitors in the UK. And I guess one of the main challenges is that, you know, as lawyers we don't have the expertise to go out, find a market, target people. So that's something that, you know, we've been trying to learn. I've had many meetings with Umar trying to, like, you know, just understand it a bit. So yeah, I guess that's where we're at right now. Cool. So I'm Khalid, and I'm a psychologist. I practice organizational psychology, or we are trying to establish a business जिधर हम IT companies को जो basic services अपना provide करते हैं या software development करते हैं, उनको psychology के solutions provide किए जाएं पाकिस्तान से बैठ के, और we working on it and we are developing it, and at the moment हम इस stage में हैं कि हमने एक market को identify कर लिया, so we just need to go through our pitch and everything so we can execute it. And हम pilot कर सकें अपनी specific market को, and then see the results के हमारे कैसे results उन्होंने produce किए, so we can take it further. Questions right now or afterwards? You can go ahead. So maybe you can introduce yourself. जी, I can. If you want to go एक round में चलते हैं. पहले तो आपने कहा psychology relevant services to IT companies, software Yes, companies? that's correct. Why specifically IT companies? So basically what we have identified is कि corporate wellness का culture जो है it's increasing over the years, ठीक है, और specifically देखा जाए कि IT industries के अंदर, क्योंकि IT industries बहुत ज़्यादा boom कर रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे focus है, तो दोनों चीज़ें आपस में correlate ऐसे कर रही हैं कि corporate wellness का business भी बढ़ा है और IT industries की in the next 10 years भी growth बहुत ज़्यादा है. So I am here to offer expertise in providing psychological services to the people of IT industry, because I understand what kind of problems they've been facing over the years. Do you So also understood? Do you also understand the IT industry specifically? कोई पहले आपने experience है working in the IT industry, or just you chose IT because it's a growing industry itself? I chose IT because it's a growing industry, and I've been working with Allied for over a year now. Okay, sure. Ji, Assalamualaikum everyone. I think most of you know me, but I'm an HR consultant and I've been working in this field for the past 10 years now. So I've been associated with Allied for the past 2.5 years. And vis-a-vis, we have also worked with multiple other companies and multiple other sectors within Pakistan. Now, having spoken to Umar multiple times, he has kind of really encouraged me also
to look into outsourced services to countries like USA, UK, and I'm primarily here not only for recruitment, but I would also like to sell other HR domains, for example, trainings or HR manuals, operations, whatever there is in the market. Where I'm stuck is, to be very honest, I haven't explored the option much. But what I would like to do is to know where I can start off from, where to target and how to go about. छोटे पॉकेट्स में हमने थोड़ा बहुत काम किया है अमेरिका में, but it is not अभी much for me to say because मैंने explore नहीं किया. Quick question. So, when you say HR services, have you worked specifically anything around, let's say, placements within the US market for, let's say, onshore resources? We tried 2-3 times, but haven't been successful. Okay. But we have done it in UAE and we have done it in Pakistan. When you say we, is that like allied with you or it's like a separate Allied, company? yes, and mine Okay. is allied too because I have my own practice. Okay. So without them. उनकी भी अपनी कंपनी है, उनकी भी अपनी कंपनी है और उनकी भी अपनी Right. कंपनी है. And our job here is enablement. Sure. Is not necessarily Absolutely. to question the legal models of it. बाकी सब लोग जो हैं IT के हैं mostly. Do you want to talk about data? No? Okay. Do you want to talk about accounting? आपने कर लिया, मुझे नहीं पता. Sorry? बताओ BPO accounting वाले क्या है? Yeah, so I'm an MBA and I've been in accounting practice for the last 20 years or now. And I've been with Light for the last 10 years. So I haven't really tried to expand as of now. But जैसे कि आपने कहा कि it's time for me to think big, so I'm looking forward to it. Not exactly the zeal I was hoping for, but everybody else is IT and I guess you guys know each other. So let me introduce to those of you who have not met on, if you can just quickly talk. Absolutely. So before I go to a round of introduction, my talk typically can get a little bit long as well. People get irritated by that as well. But I'll try to make it more engaging. A quick question. आपने अवैस अपना नाम बताया था ना? अवैस नाम बताया था ना? अवैस, you mentioned that you're providing looking to provide or providing outsourcing services to solicitors in UK, right? Yeah. Have you done something already? Have you got any success so far? I'm asking for that for a reason. Yes. So basically, we since November of last year, we've been providing. We have a monthly relationship with a firm in the UK, Okay. and we got that through some mutual friends and people. Word that of we know. mouth. Yeah, word of Okay. mouth, and we've just been kind of exploring the kind of quality that someone, a solicitor in the UK, would require. Just trying to understand it. Is there any barrier around, let's say, so my own brother-in-law just did his, just came back, barrister बना है, उसने अभी UK से ही करके आया है, तो वो basically मुझसे exactly यही conversation कर रहा था, तो I don't know the dynamics much about the UK market itself, but is there like a barrier? We'll talk about it, but आप अपना तरफ तो करा दो, आपको बंदे Sure. I was not hoping to be like in this chair. I was more kind of hoping to be in that chair. But okay, so my name is Mohammed On. I'm a sales consultant. I call myself sales consultant because that's what I have primarily been involved in, and specifically around IT sales. Within the IT sales भी ज़्यादा मेरा services की selling की तरफ experience रहा है. So there's SaaS product sales. I don't बहुत ज़्यादा मेरा knowledge इस तरफ नहीं है. मेरा focus primarily 10 साल में पिछले जो रहा है वो रहा है IT services की sales. Then I can talk about like for any number of hours about that part. But really, if we talk about the sales model, like for example, I'm sure with Mohammed Omar at Allied and you interacting with him, बहुत सारी चीज़ें जो मैं मेरी बात करूँगा भी वो आप लोगों ने कुछ हद तक तो पहले सुनी भी ही होंगी. But if you really think about it, तो जो outsourcing का sales acquire करने का तरीका है ना, चाहे वो legal services हो, चाहे accounting services हो, चाहे IT की services हो, चाहे any BPO services really, वो प्रोसेस मैप हो जाता है बड़े आराम से. वो कैसे होता है? So basically what we do or what I specialize in is we have an outbound sales engine team which has the capacity to send out about 25,000 emails, and we're trying to scale that further as well. 25,000 emails per day. Okay, so that's a lot of outreach. ठीक है. अब वो जो outreach हम करते हैं उसको हम किसी भी messaging के साथ कर सकते हैं. Like I could write down an email and say कि जी we are looking to provide
HR services, and is there a name to your company as well? Be empowered. We Empowered? Be empowered. Be Empowered. So let's say if your name is Faiza, right? Yeah. So let's say we create an email address. There's a whole process to it. मैं technicality में नहीं जाना चाहता. Brief introduction. हाँ, so जो Faiza at beempowered.com से हम email marketing करेंगे और वहाँ से हमें responses मिलेंगे. Responses को हम लोग जाके discovery call पे Long close story करेंगे. short, On is somebody who can help you find your first customer and then grow it. If you're already there, he can help you grow it. If you're exploring the market, they can help you systematically do that. He does this as an independent consultant. His company is called Connexion. Okay? Now I have a question. Sure. So is it specifically for outsourced market or Pakistani? नहीं, we don't work at all in Pakistani market. You know the dynamics. वो बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करा दें, विल ओपन इट अप टू एवरीबॉडी ताकि आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए. मैं चाह रहा हूँ कि कौन बैठा है, उससे क्या पूछा जा सकता है, आपको वो क्लियरली पता चल जाए. So is there anybody who doesn't know Abdul Rahman? You know him. Everybody else knows him too. So do you know Huma? No. So Huma is part of the sales team, and she has recently been involved specifically in research. So she can give you a lot of guidance on how to go about analyzing a marketplace to determine कि आपके लिए कौन सा segment approach करने के लिए best है, कौन सी size of company, कौन सी industry, कौन सी geography, वहाँ पे क्या बेचना चाहिए. Because she's done this for IT very systematically, there's some guidance we are hoping she can share with you on that front. ठीक है. There was one other gentleman जो नहीं आ सका. He is also an independent sales consultant. Hopefully we can get him in one other day. So there's plenty of choices when it comes to starting your own practice, and if you're stuck at the point जहाँ आपको पहला customer नहीं मिल रहा, whether वो Python की practice है या law की फलां की practice है, there is help around within Allied, outside of Allied. Everything is there. I just want to spend like 1 minute talking to you about why we are doing this, what's our interest in this, and what's the big picture for us. So the highest level picture here is that we are trying to solve a problem that Pakistan has. We all are living here. We want to make sure कि हमारे जो environment है वो बेहतर हो. पाकिस्तान का जो general problem है economic है. There's pretty much a consensus on that. Economy में सबसे बड़ा मसला current account deficit का है. यानी कि हमें अपनी exports बढ़ानी है. और exports बढ़ाने का सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस वक्त हमारे पास है वो services है. Because 75% of the US economy is services. So does it make sense to be selling Taulia? We should be selling what they're buying, which are services. अब services में IT obviously is something we've done, it's very well established. But if we can enable other people in other practice areas and you guys can go and spread the word in your industries, then we can hopefully, big picture is maybe we can dent this in a few years, decades, whatever. Okay, so that's what this is about. This is a platform for enabling you to build services companies. ठीक हो गया जी. Introduction आप लोगों के हो गए हैं. टीवी हमारा नाराज़ हो गया है. I want to be very concrete with this. I think आप में से जो लोग अभी बिल्कुल कंसेप्शन स्टेज में है ना कि अभी आपने शुरू ही किया है सोचना आइडिया के बारे में या शायद वो भी नहीं किया, तो यू वांट टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ आप एक पिच डेक बना लें. Is there anybody who is not familiar with what a pitch deck is? Everybody knows? A pitch deck is a slide deck जो आप ऐसे जैसे किसी इन्वेस्टर के सामने रख रहे हैं. ठीक है. आप कहते हैं मेरा ये आइडिया है कि मैंने पाइथन की एक प्रैक्टिस बनाई, ये मेरी टारगेट मार्केट है, ये मेरी टीम है जो इसको एग्जीक्यूट करेगी, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा कंपटीशन है. तो पहले साल में मैं इतना कमाऊंगा, इतना खर्चूंगा, दूसरे साल में मैं इतना कमाऊंगा, इतना खर्चूंगा, तीसरे साल में मैं इतना कमाऊंगा, इतना खर्चूंगा. तो ये मेरा प्रॉफिट जो है ना इस तरह से बनाएगी मेरी कंपनी. तो इन्वेस्टर भैया तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरी कंपनी पैसे बनाएगी, वो तुम्हें पैसे वापस कर देगी किसी टर्म्स पे जो भी आप आपस में डिसाइड कर लेंगे. बट पहले आपने एक मुस्तकबिल का एक तस्वीर देनी है जो ये बताए कि हम पैसे बना सकते हैं. इफ़ यू डोंट पुट ऑन दैट माइंडसेट, इवन इफ़ यू डोंट नीड द कैश, इफ़ यू डोंट पुट ऑन दिस पर्सपेक्टिव, तो आपको जो हेल्प चाहिए ना वो आपको नहीं मिलेगी. Even if you say कि यार I don't need the cash, I just need Mr. On's help. So Mr. On will say, all right, you don't have cash, so give me some equity, give me some future promise of profit or something. वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है जो हो रही है. तो आपका एक बेसिक प्रोजेक्शन बनेगी
तो फिर आपको इस सफ़र में जो हम सफ़र हैं वो मिलेगा. सो वन थिंग आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन इज जस्ट शोइंग यू वन पिच डेक, जिसको देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ओवरऑल इसकी शक्ल कैसी होती है. And then I think the other thing I just wanted to walk you through was how startup investments work. एक क्वेश्चन मेरा है, ये पिच डेक पे जो आप बात कर रहे हैं, ये मोमेंट, ये बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप. लाइक अक्सर मैं न्यूज़ देखता हूँ या वो सीड फंडिंग मिल गई कि वो ये वो, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप. लाइक वो भी इसी तरह की कुछ चीज़ प्रेजेंट करते हैं उन उस वक्त जब प्रेजेंटेशन या जो भी है. लाइक मैंने देखा है कि वो फलानी कंपनी में इतनी फंडिंग मिलती है, उसको इतनी फंडिंग मिलती है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लाइक मुझे नहीं लगता है कि हमें से या शायद हमारा वो मॉडल नहीं है, या किसी ने उस साइड पे कभी नहीं सुना कोई मतलब बिजनेस साइकिल में यार उसको इतनी फंडिंग मिल रही है. तो इज दिस समथिंग पिच डेक वहाँ पे यूज हो सकती है? लाइक So let me give you a quick rundown कि normally startups अमेरिका में किस तरह बनती हैं, ग्रो करती हैं. ठीक है, नज़र आ रहा है? जी जी. सो सबसे पहले आइडिया स्टेज है. आपने कहा जी मैं डेटा की प्रैक्टिस बनाने लगा हूँ, लॉ की प्रैक्टिस बनाना. आपका कोई आइडिया है, ठीक है, आप उस आइडिया के 100% मालिक थे. whether it was within Allied or outside of Allied, you were 100% the owner of that idea and that company, if you want to call it. ठीक हो गया. आपको महसूस हुआ कि दुनिया बड़ी अकेली है, अकेले चलना सफ़र मुश्किल है, 2 जने और मिला लेता हूँ साथ. आपने एक को फाउंडर मिला लिया. ठीक है, जब आपने को फाउंडर मिलाया तो अब उसको भी हिस्सा दिया आपने. सो यू स्प्लिट द पाई. ठीक है, आपने मे भी एक सेल्स वाला बंदा मिलवा लिया, कोई फाइनेंस वाला बंदा साथ लगा लिया, कोई इन्वेस्टर मिला लिया. किसी को भी आप दे सकते थे. उसने कहा कि तुम्हारे पास देने को तो कुछ है नहीं आइडिया के अलावा, तो तुम मुझे कुछ हिस्सा दे दो. अभी इक्विटी स्प्लिट हो रही है. इक्विटी मीन्स राइट टू फ्यूचर प्रॉफिट. ठीक है, वो उसने आधी, लेट्स से इस केस में उसने दिखाया कि आधी आधी हो गई. अब आप नोट करें कि इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई है पाए, क्योंकि आपने नया बंदा डाला था. आपने सोचा था आपको फ़ायदा तो होगा ना, अगर मैंने सेल्स वाला ऐड किया तो मेरी फिर रेवेन्यू बढ़ाओ, वरना मैं तुझे क्यों डालूँ, मुझे क्या ज़रूरत है तुझे आधा देने की अगर तू कुछ उसमें इजाफा ही नहीं करता. सो पाए थोड़ी सी बड़ी हो गई है. इसको कहते हैं को फाउंडर स्टेज. फिर अब आपने कंपनी बना ली है, थोड़ी सी चल पड़ी है, साल के एंड पे आपने कोई 2-4 दमड़ी बना भी ली है, अपने भी पैसे सारे साठ छोड़े हैं, पैसे मुक गए. आपने कहा दादा को जाके कहा कि दादाजी आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, आज ले लो कल तक बड़ा फायदा होगा. तो वो आपने जनाब यहाँ से अंकल से जो है ना 5% ले लिए और इन्होंने अपनी इक्विटी 35% कर दिए और ये 20% उन्होंने अलग कर दिया कि यार कल को कोई जो की एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी देना है ना, तो वो उनके लिए भी थोड़ा सा 20% का ऑप्शंस पूरे अलग कर देते हैं. सैम्पलिंग दिखाया हुआ. ठीक हो गया. अब यहाँ तक तो बड़ा इतना इनफॉर्मल कैजुअल से ही चल रहा था. अब आप जाएंगे फंडिंग लेने. ठीक है, अब आप फॉर्मली किसी इंस्टीट्यूट के पास चले जाते हैं. वो एंजल इन्वेस्टर हो सकता है, यानी इन फर्द है इनफरादी जिसके पास पैसे हैं, वो कहता है मैं बहुत रिस्की है तुम्हारा आइडिया लेकिन मैं इसी किस्म के काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ, तुम्हें बैंक से तो पैसे मिलने नहीं, मैं दे दूँगा. उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर. Same like Shark Tank thing. सेम लाइक शार्क टैंक थिंग काइंड ऑफ. तो ये जनरली छुरे होते हैं. ये बैंक से बहुत महंगे रेट पे आपको पैसे देते हैं. कई दफ़ा पैसे देते हैं, कई दफ़ा कोई और हेल्प देते हैं. जैसे शार्क टैंक में वो कहते हैं कि मेरा मार्केटिंग का नेटवर्क है, तो तुम अगर मेरे पास आ जाओ तो तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा. पैसे मुझे मैं नहीं दूँगी लेकिन मैं तुम्हें मार्केटिंग दे दूँगी. सो जो भी आपका मिसिंग था वो बेसिकली ऐड कर देता. सो सीड राउंड में वो पिच डेक दिखाता है. वो कहता है ये मेरी कंपनी, ये मेरी आइडिया, ये मेरी प्रोजेक्शन है, 100% सर्टन है, ये मेरी टीम है. ठीक है, तो तुम मुझे पैसे दे दो, गारंटी है तुम्हारी. अब आप जितनी लेट स्टेज पे बेचेंगे ना कंपनी उतनी महंगी होगी, यानी ये पाए उतनी बड़ी होगी. पाए बड़ी होती जा रही है ना, तो जो आप उसका हिस्सा खरीद रहे हैं वो ज़्यादा देगा पैसे आपको. जल्दी बेचोगे थोड़े मिलेंगे, पूरा साबित करके बेचोगे तो कम ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे आपको, उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे. एंड सो ऑन इट गोज़ ऑन. ये सीरीज A B C D E F इवेंचुअली वो पब्लिक डिक्लेयर हो जाती है. जब वो बड़ी हो जाती है तब तक ये वह ढेर बटपटा चुकी होती है. जनरली ये प्रोसेस है. आप हमारे यहाँ की थिंकिंग देखो तो प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है यार मैं ग्रो तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पैसे नहीं हैं. कॉन्वर्सेशन ख़त्म, स्टोरी एंड्स. वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए. आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं वाकई बिजनेस बनाने लगा हूँ, अपना शुगल नहीं कर रहा, मैं बिजनेस बनाने लगा हूँ, तो फिर जो हेल्प आपको चाहिए ना मिल जाएगी. सो मेक श्योर कि आपका आइडिया फाइनेंशियली साउंड हो. यू आर नॉट हेयर टू फाइंड वर्क फॉर योर सेल्फ नेसेसरली, दैट मे बी द फर्स्ट स्टेप, बट
you are here to build a company, and a company is there to make money. And if you're making money, other people will want to help you make money, whether they are the investors or salespeople or whatever. But if your idea is कि मैं कभी पैसे नहीं बनाऊंगा, you will die alone, a lonely death. ठीक है? This is generally how companies work. And इसी evolution से आपने गुजरना है. इस evolution में आपने हमारे यहाँ जिस तरह हम इसको इंटरप्रेट करते हैं वो ये है कि सबसे पहले स्टेप में आप किसी के पास बैठ के काम सीख रहे हैं. वो हो सकता है आपकी अपनी कंपनी, हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, वट एवर यू वर्किंग फॉर अदर पीपल, यू गेटिंग पेड फॉर लर्निंग. देन यू गेट इन टू अ स्टेज जहाँ आप कहते हैं हाँ ठीक है मैं अपनी कंपनी बना लूँगा. लाइक ऑन इज रनिंग इज ऑन वन मैन कंपनी, ही इज वर्क फॉर अदर पीपल फॉर 10 years and then now he's decided कि नहीं, I'm going to do my own lead generation company and I'm going to go my way. So he will go stabilize this first, make enough money for himself, and then he will grow and say कि ठीक है अब मुझे इतना काम मिलना शुरू हो गया, इन सारों ने मुझे कैंपेन्स दे दी हैं, तो अब मेरी ना 10 लोगों की, 1 से 10 लोगों की टीम बन गई. At every stage you will have different problems. लेकिन हम predominantly अभी ये पहली 2 stages की बात ही कर रहे हैं. आप लोग या वहाँ हैं जहाँ आपको तनख्वाह की आदत पड़ी हुई है, या उसको अभी छोड़ के तो अपना एक सेटअप बनाना चाह रहे हैं. आपके केस में probably like a step ahead, you have your own company and you want to make it 10%. Kind of. 10 We have a FTE. separate business that we're also using the resources of that business to create this. So maybe it's at a one-man show, but we have maybe more resources Sure, than. sure. These are not very hard lines, so it's somewhere yeah. on the spectrum, right? Yeah. We're not definitely far ahead of this. We're just right here somewhere कि 10 लोगों तक हमने ले जानी है कंपनी अपनी. ठीक है? सर मैं आपको एक सैम्पल पिच डेक बड़ी क्विकली दिखा देता हूँ ताकि हमें कोई हुज्जत ना रह जाए. I can find it. So this is a pitch deck of a product that somebody has made. ठीक है जी, ये ऐप टू नाम की किसी की कंपनी है. सीड राउंड में गया वो, पहले 2-3 मरलों से गुजर गया. ठीक है, इनफैक्ट ये इसने वाई कॉम्बिनेटर में प्रेजेंट की हुई है. वाई कॉम्बिनेटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंक्यूबेटर्स इन द वर्ल्ड, अमेरिका में. Is it a product company or service? It's a product. It's a product that helps people prepare for ACC exam. तो आप ACC का एग्जाम है ना, तो ये ऐप टू इंस्टॉल करते हैं आप, तो वो आपको टेस्ट क्वेश्चन देता जाता है. एंड देन ये उसका इंट्रोडक्शन है. प्रॉब्लम बताता है. वो कहता है जी इतने सारे स्टूडेंट हैं, ACC CFA के जो एग्ज़ाम्स हैं 42% उनमें से पास होते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है. इतने लाख स्टूडेंट हैं, तो हमने फिर आगे सोल्यूशन आता है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस तरह से ये ऐप है, फलानी है, कितनी है. मैं बहुत ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं जा रहा. उसका इंट्रोडक्शन देना शुरू हो गया कि इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा, फिर हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे. इन योर केस ये सर्विसेज होंगी, आप ये कहेंगे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो रियली थिंक अबाउट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग एंड हु यू आर सॉल्विंग इट फॉर. देन ही टॉक्स अबाउट द टीम, बिकॉज इन्वेस्टर्स वांट टू नो कि अगर आपका मूड किसी दिन ख़राब हो गया तो उनके पैसे सारे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे. सो आर यू जस्ट एन इंडिविजुअल और आर यू ए टीम. दिस बाय द वे दिस इज द नंबर 1 सक्सेस क्राइटेरियन इज योर टीम, नॉट द आइडिया. पीपल थिंक इट्स द आइडिया. फिर ये प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म बताना शुरू हो जाता है. ये आई विल स्किप थ्रू दीज थिंग्स क्योंकि IT स्पेसिफिक चीज़ है, सो इट डजंट रियली मैटर. हैं?
पता नहीं कंप्यूटर पे तो आराम से खुलती है। ये आ गया, ये प्रोडक्ट का रोड मैप आ गया। वो बता रहा है कि इस तरह से बनाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। उसने बकायदा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है अगले कई साल में, किस तरह से उसका वो करेगा डेवलप और ग्रो। फंडिंग एंड फाइनेंशियल डिपेंड, यहाँ वो उसने पूरी कहानी सुना के ना, अब वो कहता है कि जनाब मैंने पैसे चाहिए दे, पैसे दे। Yeah, so look at this one and you need to really think of it in these terms. आपके जो कंपनी के प्रोजेक्शंस हैं, नजर आ रही? वो कहते हैं जी ईयर 1 में 2015 में मैं इतने कोर्सेज बेचूंगा 6। This is all projection. There is no previous record. No, I mean, so this is seed round, so he may have some revenue, but he may not. Might be totally up in the air. 6 कोर्सेज बेचूंगा, इतना मेरा रेवेन्यू आएगा टॉप लाइन, ठीक है, उसमें से इतने मैं खर्चूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है, इसका मतलब है कि मुझे इसको बेचने में कितने पैसे लगेंगे जो मैंने सेल वाले को देने हैं। फिर जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है, मैं एक डेवलपर रखूँगा, प्लेटफॉर्म होगा, ये होगा, वो होगा, तो मेरा टोटल प्रॉफिट ना इतना बन जाएगा पहले साल में। उसमें से मैं ये सैलरी वैलियाँ निकाल के, तो ये 1.7 मिलियन में से ना 4 लाख जो है मेरा प्रॉफिट होगा। तो अब इन्वेस्टर सोच रहा है यार ठीक है, कोई गल है बिच, तो बात इसकी है, बीच में से अगर साल के 25% बचा रहा है, दैट्स डिसेंट, दैट्स नॉट बैड, यू नो। फिर दूसरे साल में वो कहता है और बेहतर हो जाएगा, ये 2.4 मिलियन हो जाएगा, तीसरे साल में 5.4 मिलियन हो जाएगा। तो तीसरे साल में वो कह रहा है जनाब मैं कंपनी 4 गुना साइज़ की कर दूँगा और मेरी प्रोजेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, और इतने पैसे मैं कंटेंट पे खर्चूँगा और इतने मैं मार्केटिंग पे खर्चूँगा एंड सो ऑन। अब आपके केस में अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में हो, तो आपको बेसिकली 2 ही चीज़ें चाहिए कि आपने ये इंश्योर करना है कि आपका आइडिया क्या था, क्या बेचने निकले हैं, किसको बेच रहे हैं, आपका कंपटीशन कौन है, ठीक है, और आपको कितने पैसे चाहिए पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। यू में कम बैक एंड से आई डोंट नीड एनी मनी, मैं खुद अपनी सेल कर लूँगा, मैं खुद ही अपनी डिलीवरी भी कर सकता हूँ, तो मुझे आपसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और यू में से कि हाँ नहीं, आई नीड द मनी टू डू अ सेल्स पर्सन और वट एवर, राइट। अब अगर आप लेट्स से किसी इन्वेस्टर के आगे नहीं बैठे हैं, आप किसी सेल्स वाले के आगे बैठे हैं और उसे कह रहे हैं यार तू अच्छा काम करता है, तो मेरे साथ पार्टनर कर ले, तो इक्वेशन बहरहाल यही डिस्कस हो रही है। सिर्फ वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसों की वजह, रिजल्ट फिर वही है, बिगर प्लान वही है। So yeah, you have to sell the vision of what you're trying to do, otherwise nobody will ever engage you. I have a question on this one. Yeah. So how do they, I don't understand this process, how do they come up with this projection? कि पहले साल हमने 6 बेच दिए, दूसरे साल 11 बेच देंगे. So what's the statistics या mathematics behind it? The reality of it is a lot of it is very BSc. But people will not give you hard cash for a baseless story, right? So you have to show some prerequisite. You can say for example कि फलानी कंपनी जो थी वो पहले साल में उसने ये करके इतना अचीव कर लिया था, या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है कि मैंने जब लास्ट टाइम किया था तो मैंने दुबई में इतने मिलियन कर लिए थे, तो US market is 10 times that, so I can do 10 times that, not a problem. Here's my team, here's my track record. You have to make it, you have to be confident about it yourself, and then you can convince somebody else to do it. आपको बहुत अर्ली स्टेजेस में ये रैशनल भी मिलेगा कि जी टोटल मार्केट इतनी है, तो मैं अगर उस पर 1% भी ले सकूँ तो देखें इतना हो जाए, तो 1% क्या होता है, एंड आई हैव दिस स्टेलर सेल्स गाय, सो 1% should be no problem. So that's sort of how you envision it yourself first, and then you obviously sell it to other people. Entrepreneurs are typically exaggerative. वो कहानी चुप के करते हैं, हमें भी आदत है सुनने की, वैसे हम भी हवा निकाल के चेक करते हैं, लेकिन लेकिन that's the idea, you really believe in it. Okay, दूसरा सवाल ये है कि आप ने जो ये दिखाया है, तो basically this is a seed round, that's what you said. So Yeah. when do you, at what stage you qualify for the seed round? कि आपको like you have to put in some years into it, या you have to. वो हमने किया था ना फाउंडर को, फाउंडर फिर हाँ जी, हाँ जी. आप तो अभी फाउंडर स्टेज पे हैं, हाँ जी. बिल्कुल अर्ली, so you have to do it yourself, Yes. and maybe you're looking for a co-founder in the Yes. sales guy, Yes. but you're not at the seed stage yet. You don't need money, in my opinion. Yeah. You don't need a lot of it. Yeah.
एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता आपके बिजनेस में। उनको ये बस पता होता है कि ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छा चलेगा, सक्सेसफुल ना चला तो क्रेडिट कार्ड वाला हाल करते हैं वो, ठीक है ना। दिल आपको फिर दिल टेक यू पार्ट और ओनरशिप अपनी ले लेंगे, और प्लान सी उनका ये होता है कि दिल मतलब एंड पे जाके वो majority of your जो सी है equity लेके they can find people who can run it and make it profitable. So I mean it's not like the walk in the park. तो आप लोगों की जो पिच है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, यू आर नॉट डूइंग समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग एंड इनोवेटिव जिसको साबित करना एक चैलेंज था। आपका तो बड़ा आर्गुमेंट सीधा सीधा है, इंडिया में हो रहा है, मैं यहाँ करने लगा, वहाँ जो हो रहा था वो इतने का था और यहाँ इतने का है। सो आप लेट मी गिव यू सम आइडियाज। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपका आइडिया वाकई अच्छा है, लेट्स प्रूव इट टू आवरसेल्व्स फर्स्ट एंड देन वी विल सेल इट टू समबडी। सो इज साइकोलॉजी वेलनेस, ऑर्गेनाइजेशनल वेलनेस अगर हमने बेचनी है, इज दिस अ गुड आइडिया? What numbers can I present to suggest कि ये एक अच्छा आइडिया है? So you would look at companies who are doing this, इनका revenue इकट्ठा कर लें, Uma can help you, there are tools that will tell you the revenue of those companies. You can look at the number of people जिनका title ये है wellness coach whatever, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि the market exists. You are just trying a piece of the market, not the entire market. You just say कि मैंने 1% achieve करना है या whatever. और उसको क्वांटिफाई जो है वो आप कंपनी के साइज से आराम से कर सकते हैं। यू कैन हैव प्रोजेक्शंस फ्रॉम दैट। इफ यू स्टडी 10% ऑफ द इंडस्ट्री साइज, देन यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड से दिस ओवरऑल साइज इतना हमने वैसे 10 का स्टडी किया। सो दिस रफ प्रोजेक्शन है एंड दिस इज इन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरली, छोटी मोटी गल तो होंगी। तो Huma is there, she's done this sort of research before, she can help you. If you have specific questions on this, कि इसको quantify कैसे करना है, she can definitely assist you with that. ठीक हो गया जी, ये वाली सारी बातें हो गई हैं, टीम ये भी सब हो गया, पार्टनर्स भी हो गए, ये भी सारी बातें हो गई। अब I'll just open this up to whatever questions you have on the expert. I presume problem number 1 for everybody is कि पहला कस्टमर कैसे ढूंढें या 2-4 ट्रायल कस्टमर कैसे ढूंढें जस्ट टू वैलिडेट कि ये वाली ऑफर सही रहेगी कि वो वाली सही रहेगी, तो ये वाली सही रहेगी तो वो। एंड मे बी यू कैन टॉक अबाउट द चैलेंजेस यू सी विद पीपल लाइक दिस। आप कल मुझे बता रहे थे कि दे आर नॉट मेंटली रेडी येट व्हेन दे कम टू मी। तो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस नाउ कि पहला कस्टमर कैसे ढूंढना है? आर यू क्लियर ऑन दैट? ट्राई कीजिए मुख्तलिफ अप्रोचेस तो भी पिछले 2-3 for the last 2-3 weeks we have been aggressively exploring different options here. इनके साथ भी, उसके साथ भी, दूसरी भी, so bold. What's the minimum information you need from somebody to run a campaign? तो उससे भी अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो अगर एग्जांपल लेते हैं HR की, ठीक है, या अकाउंटिंग की, तो ये ज़्यादातर कंपनी बियॉन्ड सर्टन साइज उनकी ये नीड होती है, उन्हें अकाउंटिंग करनी होती है बाय लॉ, ठीक है, और उनका कोई HR डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके राइट्स होते हैं, कुछ आपको चीज़ें जो होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी होती है। और पाकिस्तान में एक सर्टन तरीके से वो चीज़ें होती हैं। सो बिफोर वी इवन स्टार्ट एंटरटेनिंग दिस आइडिया, हमें वहाँ पे किस तरह चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ पढ़नी, और फिर वहाँ पे मतलब US में किस तरह आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके सेल कर सकते हैं, वो चीज़ हमें सीखनी होती है। और फिर यू हैव टू प्रेप योरसेल्फ कि अगर आपकी कोई मीटिंग सेटअप हो जाती है, सो क्या बात आप वहाँ पे करेंगे, किस तरीके से, किस फॉर्मेट में करेंगे कि वो उनको एक्सेप्टेबल हो, उधर इंटरेस्ट हो और इफेक्टिवली आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो कंसिडरिंग कि ये सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, तो आपको आई मीन वन राउट इज कि आप जो है बहुत बड़ा चंक उठा लें और उधर ईमेल्स भेजना शुरू कर दें, लाइक ऑन वो सही के उनके पास प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा ईमेल भेज सकता है पर डे।
दूसरा तरीका ये हो सकता है, इट्स इफेक्टिव एज वेल, यू नो, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की मार्केट में किस तरह की आपकी रीच आउट है, क्या आपका मैसेज है। लेकिन वो बहुत एक इन माय व्यू को एक ब्रॉड चीज़ होगी। आप बहुत ब्रॉड मार्केट सेगमेंट को रीच आउट करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स समझना और उनको डिलीवर करना एक बड़ी ब्रॉड चीज़ होगी। सो इफ़ यू वांट टू गो स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल आपको आईटी सेल्स का आईटी रिक्रूटमेंट का आपको तजर्बा है और यूएस में वो चीज़ किस तरह होती है, अगर आपने पाकिस्तान से रिसोर्स बाहर सेल करना है, आपको किस किस तरह के इश्यूज आते हैं, लाइक वी डिड लास्ट टाइम, उसमें बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ था और वी कुड नॉट फिगर आउट एग्जैक्टली किस टाइप का हमें रिसोर्स चाहिए। सो ए बी सी हमें यू नो मस्ट हैव क्या क्वालिटी उस बंदे में होनी चाहिए, उसको इंटरव्यू के लिए प्रेप करना है, उसकी इंग्लिश गेज करनी है, आपने एक इनिशियल असेसमेंट अपनी कस्टमर के साथ शेयर करनी, वो सारी बातें मिसल आपको ऐड करनी है। सो वंस दैट्स रेडी, इफ यू गो विद आई वुड नॉट से कि लेजर फोकस, लेकिन कोई एक सर्टन लेवल ऑफ फोकस हो, तो आपको अपना कोलैटरल जो आपको इफ यू गेट इन अ मीटिंग, वो कोलैटरल प्रिपेयर करने में saying you know talking about the exact needs of that particular market, और फिर आपका अगर प्रायर एक्सपीरियंस है तो यू नो a good story always sells, तो वो स्टोरी भी होगी आपके पास, उसके ifs and buts, उसके ins and outs, कोई चैलेंज आया, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज के या एक सर्टन सेगमेंट के चैलेंजेस भी यूनिक होते हैं और कॉमन होते हैं विद इन दैट सेगमेंट। So if you say all the right things and you have the right information, chances are कि आप थोड़े सेगमेंट, छोटे एक सेगमेंट के अंदर आप ज़्यादा इफेक्टिवली सेल कर सकेंगे। ठीक है। Did I answer the question? I hope so. You want to add something? Yeah, sure. देखिए सेल्स जो है ना, बेसिकली टू मी is a game of probability. The more doors you knock, the more access you're going to have to opportunities, right? You can go after 10 people, you might land a customer, you might not land a customer, you don't know. But if you go after 5,000 companies, कि कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा। like कहने का मकसद ये है कि आपने देखें, अगर तो आप ऐसे स्पेसिफिक नीश कंसल्टेंट है ना, मेरी फाद भाई से बात हो रही थी, मैं कह रहा अगर आप एक डाटा गवर्नेंस से कंसल्टेंट है ना, आप छोड़ दें कि आप इंडिया के साथ compete करने जा रहे हैं, आप ये करने जा रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, you don't need to do any of that. You're a super experienced person who can connect very well with senior level people in enterprise, and that's all that's needed. No Indian freelancer will probably be able to connect with them the way you can, right? You don't need to talk to like 500, 5,000, 10,000 people. All you need is like a data set of few qualified people. उनसे बात करें और उनमें काम निकलेगा ही निकलेगा। Make sense? अच्छा, but अगर आप for example start off कर रहे हैं, right? Like most of the population in Pakistan very energetic, हम कुछ करना चाहते हैं, but अभी वो niche define आपकी नहीं हुई, right? लीगल के अंदर अगर आप बात करें, there is so much of work that is there, right? There's intellectual property का भी legal work है, there's other crime, criminal law भी है, there's so much of that work, right? Are you married? नहीं, मैंने तो सिर्फ criminal law का ही customer पकड़ना, no really, मतलब you're open to like different opportunities, right? Yeah, the best. can I Just let me complete. So if you're starting off, that's just my opinion, right? If you're starting off, तो बेहतर आपके लिए ये है कि यार knock on as many doors. चाहे छोड़ दें आप email marketing को, छोड़ दें आप LinkedIn prospecting को, छोड़ दें आप कुछ करने को, आप चुप करके एक webinar कर लें, आप किसी conference पे चले जाएं, talk to a lot of people, right? And you're gonna find some opportunities that are a fit for you, right? अब outbound sales की ज़बान में इसको हम there's only one way to do it, that is email marketing. So you reach out to like thousands of people, you get a customer, and then build your practice, and then go into laser focused niches as well. Yeah, so I think I found that there's a trade-off between, I mean, if we go for a wider net, any kind of outreach that we're doing will be generalized. Absolutely. In
in our industry, I don't know about, I can't speak for anyone else, but specialized work is appreciated. Of course. So, how do we make that decision कि हम इतना general करें या इतना specific बिल्कुल. करें? How do we find that right balance? बिल्कुल, absolute, great question. देखिए, classical जो एक discussion हमेशा, ये starting of business ना, ये discussion था हयात, आज लिख के रख लें, आपके साथ चलनी है quality versus quantity. Is there an answer to it? Maybe. There's so many points of view. If you have the budget and if you have the patience, दोनों करें. आप email marketing भी करें, आप LinkedIn prospecting भी करें, आप webinar भी करें, आप Google Ads भी चलाएं, right? Why not Google Ads? Why not run a webinar? Do some podcasting with legal companies, run it the way, like in the podcast, talk to them. अच्छा आप क्या करते हैं, किस टाइप के customer है, कितनी आपकी टीम है? This is a discovery call right there, right? You understand about the company, you talk to them, you have exactly their pain points, what are the core strengths, accordingly आप अपनी services sell करेंगे, right? So there's so many approaches. आप चाहें तो Google Ads run कर लें, if you have the patience and the budget for that. If not, and if you're super confident कि यार मैं एक ऐसा sales वाला हूँ, मैं 10 से भी बात करूँ ना, तो भैया मैं तो convince कर लेता हूँ किसी बंदे को, then start with that. But if you are that person, आप कहते हैं यार मैं explore कर रहा हूँ अभी चीज़ें, ठीक है ना, मैं भी अपनी चीज़ें build कर रहा हूँ, मेरी अभी कोई ऐसी niche define नहीं हुई भी कि मेरे पास कोई 5 बड़े criminal law की firms का काम आता हो. So nobody really knows you at this stage, right? So if you're not there at that point, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि यार ऐसे तरीके के पीछे जाएं जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से at one time बात कर सकें. Conferences are one way, email marketing is another way, Google Ads is another way. Go with that, right? So ये सच, so इसमें से कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है, बल्कि हम तो सुना करते हैं कोल्ड कॉलिंग इज डेड. याद है आज 2015-16 में हम सुनते थे कि कोल्ड कॉलिंग इज डेड. कोल्ड कॉलिंग भी लोग आज के दिन में करते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग, यार ने बताया लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, ठीक है, और चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं. इन माई पर्सनल ओपिनियन, सो आई हैव, मैंने काफ़ी सारी IT कंपनीज की सेल्स टीम, सेल्स इंजन्स जो है ना, फ्रॉम ग्राउंड अप बिल्ड किए हैं एंड रन किए हैं, ठीक है. और मैंने, सो विदाउट गोइंग इनटू नेम्स, आई वर्कड स्पेसिफिकली विद वन कंपनी जहाँ पे द मेंटालिटी वाज कि नहीं यार हमने तो करनी ही प्रोस्पेक्टिंग है, हमने थोड़े लोगों से बात करना है और उसमें से कस्टमर निकालना है, ऑल पावर, ठीक है ना, बिल्कुल सही अप्रोच है, लेकिन चांसेस ऑफ गेटिंग अ सक्सेस आर लोअर, राइट? इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब व्हाट हैपेंड इन दैट टेन्योर वाज कि अब अगर हम बात करें लेट्स से लीगल सर्विसेज की, there's so many of companies like yourself, right? अगर आप बात करें HR की, there's so many other companies also that do the same work. But if you're that data scientist जिसकी availability, जिसका जो skill set है वो इतना rare है कि वो जहाँ जाता है उसको काम मिल जाता है, तो बिल्कुल सही है आप जाएं एक ऐसी approach के पीछे जहाँ पर आप थोड़े लोगों से बात करें लेकिन quality conversations करें. Quality conversation करेंगे, किसी से भी करेंगे, you're gonna get success. But अगर आप एक ऐसी सर्विस करें जो unfortunately हम सारे इस रूम में बैठे हैं, we are competing against India जिसकी मेरे ख्याल में $300 billion पे IT एक्सपोर्ट है, हम $3-5 billion पे एक्सपोर्ट में बैठे हैं. So they're doing all of that. You don't have that differentiation factor. Then आप भूल जाएंगे आप 10 लोगों से बात करेंगे और आप उनमें से कन्विंस करेंगे, कभी भी नहीं होगा. हाँ, you'll get lucky every now and then. You'll find a customer. ऐसा नहीं हो तो रिस्क तो हम कहते हैं हमारा तो बड़ा फर्म बिलीफ है जी, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है. और मैं समझता ये हूँ कि आप घर से निकलते हैं ना, आप किसी भी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे ना, आपको उसका समझ ज़रूर मिलेगा. आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो घर कुछ एक डिसेंट इनकम नहीं लेके जाता, राइट? वी ऑल अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. बट हम बात ये करें कि यार प्रिडिक्टेबली, द कीवर्ड हियर इज प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है? प्रिडिक्टेबल सेल्स इंजन, प्रिडिक्टेबिलिटी तभी आती है जब आप मैथ्स के ऊपर खेलते हैं. अगर आप मैथ्स पे नहीं, इफ यू टॉकिंग टू 10 कस्टमर्स दिस क्वार्टर, you get lucky, you close 5 customers, well done. But what happens next quarter में आपके ना हो, right? तो the sample data set is very small. यही अगर आप हर क्वार्टर predictably, यार मैंने आज से तय किया, मुझे नहीं पता, everybody under the sky who's looking for a legal service should know about my company, तो probability बढ़ जाती है ना आपकी. So ये basically classic आपकी जो है ना एक conversation चलती रहेगी, comparison चलता रहेगा,
कि क्वालिटी के पीछे जाएं, क्वांटिटी के पीछे जाएं. माय 2 सेंट्स एज अ रैपिंग अप आर्गुमेंट फॉर दैट इज, अगर आप रियली डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशंस में, और अगर आपकी सर्विस इतनी टारगेटेड और नीश ओरिएंटेड है कि आपके कंपेटिटर्स थोड़े हैं और डिमांड ज़्यादा है, तो आपको थोड़े में भी रिजल्ट मिल जाएगा. लेकिन अगर आप एक सैम्पल कमोडिटी टाइप सर्विस बेच रहे हैं, एचआर सर्विसेज, एवरी कंपनी नीड्स एचआर एंड देयर इज नो रियली, वी ऑल नो दैट राइट. मतलब लीगल सर्विस बहुत सारी तरह की कंपनीज हैं, तो फिर बेहतर है कि मैथ्स पे खेलें, यू विल गेट द रिजल्ट्स. I have a question. So, जी what would be, if I ask you, what would be आपसे भी दो अप्रोचेज हमारे सामने आ रही हैं. अब अगर मैं एज अ कंज्यूमर उन दोनों अप्रोचेज में से डिसाइड करना चाहूँ, बिकॉज आई विल बी लुकिंग फॉर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इट, श्योर ऑप्टिमल Sure. और प्रूवन विद प्रूवन मेथडोलॉजीज. सो उसमें फिर एक तो मुझे उसमें चूज करना थोड़ा सा होगा. दूसरा, अगर मैं मैथ्स में खेलता हूँ, मैं आई एम डूइंग माई रेगुलर थिंग एवरी डे, जी. तो मैथ्स पे फॉर एग्जांपल हमने 25,000 ईमेल भेज दी और मेरे फर्स्ट 2 वीक्स के बाद मेरे तकरीबन पर डे 3 से 4 इंटरव्यूज आना शुरू हो गए. सो और उसमें भी आपके वो इंटरव्यूज यू आर नॉट श्योर कि वो क्वालिफाइड हैं, वो सिर्फ आपको सलाम दुआ करने आए हैं या वो अपना कुछ चुरन बेच रहे हैं, यू नेवर नो अबाउट इट, राइट. सो उसमें तो फिर डोंट यू थिंक कि उसमें जाके आपका टाइम वेस्ट होगा? Sure. So the way I would answer this question is, ये जो आपने specific question पूछा ना, absolutely, questions, नहीं 100%. So the way I would answer that question is कि जहाँ तक हम बात करें ना qualification की, ठीक है, ये जो आपने सवाल किया यार मेरे इंटरव्यू तो तो होती ही relevant है, समथिंग लाइक दैट राइट, कि हम रीच आउट करें लेकिन हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है लेकिन वो आगे कन्वर्ट नहीं होती फॉर वन रीजन और अनदर लीड. तो वो प्रॉब्ली आपकी जो जिसको आप कहते हैं ना आईसीपी डेफिनेशन में, या जहाँ आप डाटा एक्सट्रैक्ट करें, जैसा लीड को क्वालिफाई करें, उस प्रोसेस का क्वेश्चन है. वो अप्रोचेज में ये आपको ये भी हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल थोड़ी कंपनीज को रीच आउट करें, वहाँ पर भी आपकी कन्वर्जन ना हो, और ये भी हो सकता है आप मैथ्स अप्रोच करें और आपकी कन्वर्जन ना हो, राइट. तो ये मेरे ख्याल में एक आईसीपी का क्वेश्चन है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आपका कौन सा है. So let me tell you quickly कि ICP किस चीज़ को कह रहे हैं. ICP जो है ना, वो ये है कि आप ये कहते हैं कि जी मैं बेचने लगा हूँ साइकोलॉजी, तो किसको बेचनी है आपने? अब किस से क्या मुराद है, किससे मुराद, अगर आप इन्हीं सवालों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और सोचें कि ये सारे सवाल मिला के ना एक एक्सेल शीट बन रही है. इनफैक्ट आई विल शो यू आवर एक्सेल शीट जो इन्हीं सवालों के साथ बनी हुई है. फर्स्ट पार्ट वाज कि वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्टिमल Cost effective, उसको उसको बता दें. मेथडोलॉजी कौन Yep, सी yep. हमें करनी चाहिए. ये हमारी एक एक्सेल शीट है जिसमें अपनी सारी कैंपेन्स ट्रैक करते हैं. कैंपेन ये है कि आपने अपने आइडियल कस्टमर को एक बार हिट किया, कुछ रिस्पांस आया, उसमें से आपने असेस किया कि ये एक अच्छा आइडिया था कि नहीं. ठीक है. सो बट व्हाट डज अ कैंपेन एग्जैक्टली मीन, राइट? तो पहले तो आपने देखना है कि आपने क्या बेचना है. वो जिस तरह कह रहा है कि आप अगर आप फैसला कर लें में भी आप कहें कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट भी बेच सकता हूँ, मैं क्रिमिनल भी बेच सकता हूँ, मैं फलां ये लाइक 6 आइडियाज़. आप जॉब्स वगैरह को एनालाइज करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, जॉब डेटा को देख के, जो पब्लिकली अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको देख के, द नंबर ऑफ कंपनीज डीलिंग इन दैट स्पेशलाइजेशन, उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शुड आई रियली बी सेलिंग दिस, इज दिस अ मार्केट बिग इनफ फॉर मी, एंड देन यू वांट टू फिगर आउट कि इसमें आपकी डिफरेंशिएशन क्या है, विच इज़ व्हाट यू सेलिंग. इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि यार ये बेचना चाहिए. ठीक है जी. अब जब आपने बेचना है तो कोई जनरली किसी को अप्रोच करने के लिए अब आपको उसको सेगमेंट करना है. देयर आर मिलियंस ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड, विच वन डू यू वांट टू हिट? अगर ये कहते हैं 5,000 a day भी है, विच 5,000, राइट? सो वन वे टू स्लाइस इट इज टू गो बाय इंडस्ट्री. सो कौन सी इंडस्ट्री पकड़ेंगे आप साइकोलॉजी के लिए? कहते हैं जी आईटी पकड़ेंगे, आप कौन सी पकड़ेंगी? Not very fixated on anything. Sure, but how would you go about narrowing that down, right? If you say nothing, then that No, means no, like a no. position Generally, company. मैंने कहा we have not thought about it, but since I've recently Properly, worked with IT companies, so maybe that. तो you could say कि हम ना दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए काम करें, Fortune 500. ठीक है, because my stuff is so amazing.
we will only work with the largest. But now, to answer your question, I would target small and medium companies because बड़ी companies के पास तो HR department So होंगे. this is a size metric, ना? Yeah. आपने size के हिसाब मैंने से size कहा के कि हिसाब से. छोटी वाली ऐसी होती हैं जरा आसान होती हैं to Yeah, manage whatever, yeah. तो मेरे service के लिए ज़्यादा suitable है. You could also say कि नहीं मैं ना it doesn't matter, मेरा काम तो commodity है, हर बंदे को legal चाहिए, हर बंदे को recruitment तो चाहिए ही है ना. So let's just pick the company जो fast growing है, इनके पास पैसे हैं, they're doing something right. So let's just go there. एक ऐसी कंपनी जो स्टैगनेट की हुई है, ग्रो ही नहीं करती, उसमें किसी भी नए बंदे की एंट्री मुश्किल है ना, तो आप कहते हैं नहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग पकड़ लो यार, ठीक है. एंड देन द अदर थिंग यू शुड प्रॉब्ली थिंक अबाउट इज शुड यू बी गोइंग टू एंड कस्टमर्स डायरेक्टली और समबडी इन बिटवीन. सो यू वुड से के should I be going to Pepsi and selling legal services or should I be going to a law firm which sells to Pepsi for a law firm? दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. एक में आपको बफर्ड एक्सेस मिलती है, एक में आपको जरा वेरिएंस ज़्यादा मिलती है, ठीक है. Where to sell? This is in the context of geography. Should you be selling in Malaysia or should you be selling in the US? अच्छा, इसका डेटा आपको आराम से मिल जाएगा कि अमेरिका की इकोनॉमी कितनी बड़ी है. अमेरिका की हर स्टेट का अपना GDP पब्लिश होता है. I don't know if you know this. And in the US there are only 3 states which have actual activity: New York, Texas and California. बाकी सारे वेले हैं, हमारे से भी घटी हैं. And if you compare the US to the UK, it's like a tenth of the market. Yes. So ये numbers आपको publicly मिल जाएंगे. Huma can actually give you exact numbers. So figure out कि आपने कहाँ बेचना है and go where the money is. जहाँ पैसा होता है वहाँ activity होती है. लाहौर शहर में इसीलिए employment ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पैसा circulate कर रहा है. And you can also pick a place where the fastest growing companies are. For example, अगर oil prices बढ़ी हैं तो टेक्सास में, क्योंकि ऑयल की इंडस्ट्री है, तो टेक्सास ग्रोज. एंड व्हेन टेक्सास ग्रोज, नॉट ओनली ऑयल, एवरीथिंग इन टेक्सास विल ग्रोज. तो वो जो ट्रक वाला है ना, जो ऑयल कंपनी के लिए चीज़ें लाता है, वो भी ग्रो करेगा. और जो लॉयर है टेक्सास में जहाँ ऑयल का पैसा घूम रहा है, वो भी ग्रो करेगा. सो यू कैन पिक दैट. साइज ऑफ द कंपनी की हमने बात हो गई, किससे आप सबसे आराम से बात कर सकते हैं और मतलब इन द ब्रॉडर सेटिंग आपको कहाँ होगा. वेयर की भी कुछ हमने बात कर ली है. हु टू कॉन्टैक्ट, दिस इज़ प्रॉब्ली प्रीटी इम्पॉर्टेंट. किससे बात करेंगे. अब आप चले गए हैं टेक्सास में, एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ आपने बात शुरू कर दी है, किसको टारगेट करना है. CEO को कर लें, CFO को कर लें, हेड ऑफ HR को कर लें, C लेवल को करना है आपने. ज़ाहिर है वो बिजी आदमी है, उसके पास एक्सेस ज़रा मुश्किल होगी. शुड यू बी जस्ट एट द फर्स्ट पास, अभी आपकी प्रैक्टिस भी नहीं पक्की हुई, कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं, really have nothing to offer, is the first freaking call. Maybe just pick out the Pakistanis in the lot. आखिर हम इतने भी बांझ कौम नहीं हैं. हम सबसे अच्छा काम अपने लोगों की एक्सपोर्ट ही करते हैं. तो वो एक्सपोर्ट होके कहाँ गए हैं, वो जहाँ गए हैं आप उनसे बात कर लें. They have generally a more receptive attitude towards it. So if you go to LUMS on LinkedIn, you go to LUMS and then look at the alumni. It will let you filter the alumni by country. So you can look at LUMS law graduates in the US. It will give you a list. And then their teams can actually give you the exact contact information for these. ठीक है, या वो 500,000 के बारे में दे सकते हैं. And obviously LUMS is not the only one. आज से 50 साल पहले भी वकील गए हैं. You can pick entrepreneurs, which are a kind of person who is very ready to talk to anybody. Is the easiest meeting to get. क्योंकि वो वेला ही बैठा होता है, बड़ा हाइपर एक्साइटेड होता है अपने आइडिया के बारे में. थोड़ी सी आप उसकी कहानी सुने तो वो आपकी सुन लेता है. तो अगर आप अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ना, bounce that off that guy and that will really help you get a conversation going. But don't expect कि उसमें conversion बहुत अच्छी हो. Conversation अच्छी होती है. And then you can obviously pick some very influential people. जो मशहूर सा lawyer है, वो अगर आपकी बात सुन ले, retweet कर दे or something, that suddenly gives you a lot of traction. So आपका सारा focus ही होता है कि फिर मैं influencers पकड़ लूँ. So a lot of the video games have been marketed like this. कि वो influencer पकड़ लेती हैं, उनको free games and boxes और उनके events sponsor कराती हैं. वो उस influencer को देख के फिर उसके मगर सारे लग जाते हैं. और आखिरी बात ये कि बात सेकेंड लास्ट ये कि बात कैसे करनी है. ईमेल भेजनी है, लिंक्डइन पे करनी है, फ़ोन करना है. सो द चैनल इज़ इम्पॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू spam emails, but they will pick up the phone if you give them a call. There is no perfect channel. And then the last thing is when. This is generally ignored.
कि आप जा रहे हैं बेचने, you could have the perfect offer, you could be talking to the right person, it's just the wrong fitting time. It's actually just coming up, क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस से 1.5-2 महीने पहले किसी ने आपकी बात भी नहीं सुनी। हम आपको बताएंगे कि साल में कौन से 3-4 अच्छे टाइम होते हैं, जनवरी मोस्टली आईटी के लिए, और उसके बाद अप्रैल और फिर 2-3 महीने अगर आपके थ्रू अक्टूबर की फ्लाइट टू करो। सो इन्हें पिछले 10 साल का डेटा एनालाइज किया, आईटी का स्पेसिफिकली जॉब पब्लिशिंग का डेटा, तो शी कैन गिव यू एग्जैक्ट मंथ्स जिसमें वो एकदम पीक करता है फिर गिर जाता है, फिर नीचे चलता है, फिर पीक करता है, फिर गिर जाता है। क्या चीज़? जॉब्स पोस्टेड पीक करती है। ओके, सो इट्स लॉन्गिट्यूडनल, 10 साल से पैटर्न साफ नजर आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, से इलेक्शन ईयर से पहले दैट वुड बी समथिंग टू लुक एट। यस, अगर डाउनवर्ड जा रहा है उसके लिए काफ़ी डेटा चाहिए होता है, 4-4 साल की साइकिल देखनी बट पड़ेगी। सर वो हम लोग कंपनी बेसिस पे जैसे इनकी एचआर है तो जब किसी ने आईटी की हायरिंग स्टार्ट करनी है तो हम इसके भी थोड़े से मतलब हमारे पास प्रूफ्स तो होते ही कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो जब उसने आईटी हायरिंग स्टार्ट करनी है तो उसी वक्त एचआर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ या हाँ, अगर हमने अपने रिसोर्सेज लेके जाने हैं तो उस वक्त उनको ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ये जो 6-7 चीज़ें हैं ना, आप सोचेंगे ये एक्सेल शीट में कॉलम हैं, तो आपने इनको कहना है ऑन साहब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, 5-7 आइडियाज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं ना कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू बेचता हूँ, ये मेरी सर्विस होगी और मैं बहुत चीप बेचूंगा, ये मेरा डिफरेंशिएटर होगा। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री पकड़ लेता हूँ, तो आजकल टेक बहुत चल रही है, तो लेट्स से टेक वालों को बेचूंगा, और फास्टेस्ट ग्रोइंग है और छोटी कंपनियां टारगेट कर लो इस सेक्टर के अंदर और वगैरह वगैरह। तो ये मेरा एक सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई है, और ये मैंने सेगमेंट टेस्ट किया है, तो ये ना 5-6 हज़ार कंपनियाँ हैं या 10 हज़ार हैं या 50 हज़ार हैं। तो ऑन साहब ये आप लें और चला दें, मेरी मीटिंग करा दें। ही मे कम बैक एंड से कि यार दिस वाज नॉनसेंस, तो आप जो है ना गो फाइंड अनदर सेगमेंट। तो अब आप पिवट करेंगे वापस, आप कहेंगे ये जो मैंने बनाया था ना इसमें से कुछ एक चीज़ गलत थी, something was wrong, maybe it's the wrong time, maybe it's the wrong guy, etc. etc. You come back, you pivot again, and you go again. So other people's experience can guide you somewhat in this, but there are no absolute right wisdoms from the sky. Trial and error. हाँ, वो तीसरी चौथी में ना आपको समझ आने लग जाती है। And the Excel sheet that I was showing you, for example, these are campaigns that we have run over the last I don't know 10 years or something. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वो हम उसका पूरा ट्रैक रखते हैं कि कितनी ईमेलें भेजी थी, उनमें से कितने जवाब आए थे, फिर उनमें से कितनी मीटिंगें हो गई थी, तो क्या टाइम ऑफ द ईयर था। तो फिर द आइडिया इज दैट इवेंचुअली वी विल स्टार्ट लर्निंग कि क्या Can you also share like a summary, अगर कोई ग्राफ में आपने ग्राफिकली इसको पिवट टेबल वगैरह लगाया जो हमें शो करे कि यार हमने कहाँ से आपको सबसे सक्सेस मिली in terms of responses, in terms of appointments? we don't have that data yet, and especially I think when you generalize it to the level of BPO, it's very hard to say. What does that mean when you generalize it to the extent of यानी BPO? ये सब IT की कैंपेन्स है ना, तो Oh, यहाँ okay. पर आप कोई पैटर्न ढूंढ Of सकते course. हैं, पर जब आप रिक्रूटमेंट शुरू करते हैं आप दैट इज मे बी लेस कम्पिटिटिव। Absolutely. So वो comparison study, but specifically मैं तो क्योंकि वो IT से ज़्यादा हमारा हुआ है ना, तो मैं खुद interested इसमें कि मतलब because not every company tracks things to this extent कि पिछले 10 साल का data आपके पास available हो ना, so that gives you a lot of kind of wisdom कि यार कहाँ पे हमें like I see Magento there, Google there, and then there's like Nigel Franks of the world and everything, right? Definitely, and I can give you some ideas. There's some things that definitely don't work. and that's more important to know. Yeah. That's more important than what doesn't work. Yeah. So, And I mean, as salespeople, you probably all know there's a lot of stuff that will not work. I'm more kind of interested in like जिस तरह specific domains है ना, जैसे अब यहाँ पे I see BizDoc, I don't think BizDoc का काम बहुत ज़्यादा होता है, is it? नहीं होता ना? Never Like, work. हाँ, so Salesforce का definitely बहुत काम होता है, लेकिन somehow बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मुझे Salesforce consultant नहीं मिलते। Cloud का बहुत काम है, especially after COVID and everything moving to the cloud and everything. So that's You and I interesting. can we can have a discussion offline. बट मैं जो चीज़ यहाँ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ ना, ये अभी है अपनी थिंकिंग के अर्ली स्टेज में। Sure, sure. You need to come up with 5 or 10 segments as they are defined in the slide. ये इसका जो कलेक्शन है ना, ये 5-7 जो है ना, इसका आपने इसके कॉम्बिनेशन देने, रोज देनी है।
ये भी हो सकता है, ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, यू प्रॉब्ली हैव अ गुड रीज़न टू बिलीव कि ये चल सकता है, गुड इनफ टू पुट योर मनी इन योर माउथ. तो जो एलाइड वाले हैं देर एक्चुअली पेइंग फॉर द कैंपेन. जो आप बाहर वाले हैं ऑब्वियसली यू कैन डू इक्विटी और व्हाटएवर. तो यू हैव टू हैव अ गुड रीज़न टू टेल द अदर गाय कि तुम अपना टाइम लगाने लगे हो. सो हियर इज अ प्रीटी गुड अमाउंट थिंकिंग कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एवरेज दुनिया में, सम रैशनैलिटी जस्टिफाइड. ओके, मेरे पास दो सवाल हैं. एक सवाल ये है कि मैंने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज शॉर्ट लिस्ट की हैं और 4 सबसेट्स बनाए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, और हर सेट के अंदर 1000 कंपनीज हैं विद डिफरेंट डेमोग्राफिक्स. सो नाउ आई एम एट अ स्टेज कि मैं हर जो सबसेट है उसको कांटेक्ट करूं और कांटेक्ट करके आई वांट टू सी के हाउ इट गोस, के कहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है. सो मेरा फर्स्ट सवाल इस पे ये है कि व्हाट डू यू थिंक विल बी अ गुड पायलटिंग नंबर. अगर 1000 कंपनीज है एक सेट के अंदर तो कितना करना चाहिए, 10 करना चाहिए, 50 करना चाहिए? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम योर कन्वर्सेशन. सो आई बिलीव कि सेल्स के अंदर इट विल बी अ गुड अप्रोच टू गो विद एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. इधर ईमेल्स भी हैं, आउटबाउंड कॉल्स भी हैं, लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग भी है एंड एवरीथिंग. गूगल एड्स का भी आपने जिक्र किया. सो एट अ अर्ली स्टेज, जिस स्टेज पे भी मैं हूँ, व्हाट डू यू थिंक वुड बी, क्योंकि आई विल बी डूइंग एवरीथिंग एट दिस वेरी स्टेज, सो व्हिच technique would you prefer, which would be most effective for me in this stage? So 2 questions. Okay, so yeah, you wanna take that? ठीक है. Okay. एक्चुअली So- अगर आप दोनों ही ये क्वेश्चन लें. जी जी श्योर. सो देखें, आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा ना वो आपने पूछा है कि यार मिनिमम डाटा सेट कितना होना चाहिए. दैट वाज द क्वेश्चन, राइट? हाँ सही थी. आई थिंक 1000 के आपने 4 सेट्स बनाए, राइट? जी. आपने ये जो 4 की डिवीजन की है, क्या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स वाइज उनमें डिफरेंस था, जिस तरह आपने डिवाइड किया कि ये 1000 लेट्स से बिहेवियरल साइकोलॉजी के, ये आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद साइकोलॉजी. So basically इनकी डिवीजन ऐसे की है. नंबर 1 कैलिफोर्निया से लिए कंपनी साइज के अंदर ओके डिवीजन किया था. ओके. ज्योग्राफी एंड कंपनी साइज वाइज किया यस. आपने. एंड नंबर 2 उसमें 2 मेजर सबसेट्स हैं. एक इज आईटी कंसल्टेंट्स ओके और दूसरा है कि सारे सॉफ्टवेयर जो सर अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह. नो बट जो फर्स्ट डाटा सेट है 1000 का, वो सिर्फ ये है कि कोई भी कंपनी जो ज्योग्राफी वाइज कैलिफोर्निया की फॉर एग्जांपल, या उसमें भी आईटी कंपनीज भी हैं. सो जो 4000 है ना ऑल टुगेदर, वो जी. सारी आईटी रिलेटेड है. राइट. ठीक है? उसमें से 2000 है जो आईटी कंसल्टेंट्स हैं ओके और उसमें से जो 2000 है वो हैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज हैं. और फिर 2000 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो कंपनीज की साइज से डिवाइडेड है. एक है 50 to 200 और दूसरा सबसेट है 200 to 500. Is there like a differentiation as far as कि जो 2 to 100 वाली कंपनी, 2 to 10 या 2 to 100 वाला डाटा सेट है, इसको स्पेसिफिकली आपकी जो सर्विस है वो कोई डिफरेंट सर्विस आप सेल करना चाह रहे हैं, सेम ही सर्विस Same across services. सेम सर्विस. So I want to see Right. which would be more ओके. interested. सो देखिए डाटा को डिवाइड क्यों किया जाता है ना, पहले तो ये देखें आप डाटा को डिवाइड आप क्यों करते हैं. ठीक है, डाटा को आप डिवाइड इस तरह करते हैं और इस रैशनैलिटी के तहत करते हैं कि अगर तो आपकी सर्विस फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइक फाइजर सेड कि यार बड़ी कंपनी में एचआर चाहिए ही नहीं होता यार, मैं क्यों उसके पीछे जा रहा हूँ, राइट? आई डोंट नीड टू गो अप टू देम, आई नीड दोस. सो अगर या कोई डिफरेंशिएशन ऑफ सर्विस हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि फाद भाई से बात होती है डाटा गवर्नेंस चाहिए कहाँ होती है, तो हमने कहा यार डाटा गवर्नेंस मेरा ख्याल ये है, अब हम थिंकिंग दिस थ्रू, राइट? सो वी आर थिंकिंग यार डाटा गवर्नेंस वहाँ चाहिए होती है, बहुत सारा डाटा होता है. अच्छा कहाँ बहुत सारा डाटा होता है? हमने कहा यार एंटरप्राइज में बहुत डाटा. ओके, सो डाटा गवर्नेंस की कैंपेन आने मेरे ख्याल एंटरप्राइज की डाटा गवर्नेंस की कैंपेन के थ्रू आते हैं, उसकी मैसेजिंग ही फर्क है, राइट? अच्छा अब हम बात करते हैं कि यार डाटा का काम तो हर जगह ही होता है, डाटा गवर्नेंस का नहीं होता. तो यार छोटी कंपनीज का जो है ना, उसको डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा लेक और इस किस्म की चीजों की तरफ लेके जाओ. सो नाउ द सर्विस इज डिफरेंट बेस्ड ऑन द, समझ रहे? जो डाटा सेट आपका है, डिफरेंशिएशन इस तरह हमने किया है कि इस डाटा सेट को ये सर्विस बेचनी है, दिस इज आवर एंट्री पॉइंट. इस डाटा सेट को ये सर्विस बेचनी है. अगर आपकी सर्विस सेम है तो इट्स गुड दैट यू डिड दिस क्रिटिकल थिंकिंग. बट नाउ द क्वेश्चन रियली इज कि यार क्या अभी 4000 लोगों से आप अकेले बात कर लोगे? तो 4 राइट. सो नाउ इज अच्छा सा कोई टेम्पलेट लिखें जो जेनेरिकली इनको कवर करता है और सब पे चला दें एक दफा और देखें क्या आता है, एंड देन ऑप्टिमाइज फ्रॉम देयर. फिर आपको खुद नजर आएगा यार ये अगर फॉर एग्जांपल इसमें रिप्लाई नहीं आया,
लेकिन ये प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसने बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट की पोजीशन पोस्ट की है, तो इसको मैं पर्सनली रीच आउट करता हूँ। ये अप्रोचेस हैं, ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर अप्रोचेस, और इसके ऊपर हम मतलब दिस विल प्रोबब्ली नीड अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम टू गो थ्रू कि यार क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, डाटा को अगर आपने कट डाउन करना है तो किस तरह करना चाहिए। बट साइकोलॉजी की साइकोलॉजिस्ट और इस किस्म की सर्विस अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में 4000 की डाटा सेट का आप कैंपेन रन करें, सी व्हाट रिस्पॉन्सेज यू गेट, मे बी यू गेट 5 रिस्पॉन्सेज, उन्हीं से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। When you say 4,000 you mean जो आपने शॉर्टलिस्ट की हैं या 4,000 मीटिंगें चाहिए आपको? नहीं, मैंने ये डाटा बात सेट की है, है डाटा सेट है कि 4000। ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो मैंने जो फिल्टर्स लगा के चेक किए कि ये पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, तो अगर मैंने देखना है कि मुझे किसको ज्यादा मार्केट करना चाहिए, Sure. तो पायलट मुझे फर्स्ट ये मेरा क्वेश्चन था हाँ। कि पायलट कितने नंबर पे करना चाहिए और किस व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर मी So you wanna take that? Sure. So मैं आपको ये थोड़े से नंबर दे दूं कि यहाँ 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये जरा केयरफुली चलते हैं। ये इनके पास जरा बड़ी वाली पिस्टल है, ये 5,000 बंदे को एक दिन में हिट कर जाते हैं आराम से, 20-20 हज़ार को कर जाते हैं। तो ये कहते हैं आप सोचें ना, जाने में एनालिसिस पैरालिसिस में ना पड़े। सो माय शॉर्टर माय अप्रोच इज दिस, देखिए यार सादी सी बात है, अगर आप में वो फहम और वो पेशेंस है कि आप अगेन वी कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट कि यार आप इतने सुपर डाटा साइंटिस्ट हैं कि यार आप जिससे बात करते हो कहते यार तू किधर था, तो मिला क्यों नहीं मुझे पहले आके, समझ रहे हो? तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यार बिल्कुल आप अपनी ब्यूटीफुल क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस लोगों से कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपकी ईमेल में पर्सनलाइजेशन इसी एक्सटेंट तक जानी है, हाय जॉन, हाय स्मिथ, हाय एडम, हाय, नीचे कॉन्सेप्ट वही है, सादा खुशबू आपने एचआर सर्विस बेच रहे हैं, सादा खुशबू आप जो लीगल सर्विसेज बेच रहे हैं या व्हाट नॉट, तो फिर यार नॉक ऑन एज मेनी डोर्स। मेरी अप्रोच में ना आप सॉरी बात काटो, ईमेल मार्केटिंग को आप छोड़ दें, डोंट से बिकॉज आई रन ईमेल मार्केटिंग, दैट्स नॉट द रीजन आई एम टेलिंग यू टू डू दिस। आप मेरे से कहा यार ईमेल मार्केटिंग से मेरी तौबा गैर है, मैंने करना ही नहीं, but then make sure that you talk to 4,000 people that you extracted. Do you have the patience to do that? Nobody has that. Nobody has the time to do that. You're going to run like 10 companies prospecting. आप करेंगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कितनों से कर लोगे बात, कितनों से क्वालिटी आपको। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि थोड़े लोगों को पकड़ें और अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो फिर उनको समझने की कोशिश करें और समझें और So try big and then keep on building. Like for example, let's talk Aves, right? So let's take an example. I have no idea of law, okay? बट मैं आपको कहता हूँ मुझे इतना पता है कि यार मैं आपसे पूछूंगा यार आपके कीवर्ड्स कौन से, आप कहते हैं यार जनरली ना लीगल में कुछ खास कैटेगरीज है, लेट्स से क्रिमिनल लॉ होता है, मैं अपना जो महदूद नॉलेज है उसको यूज करते हुए कीवर्ड्स डिफाइन कर रहा हूँ, यू कैन गो बेटर देन दैट, राइट? मैं कहता हूँ क्रिमिनल लॉ का भी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, आईपी लॉ भी है, इन सारों का ना मैं एक डाटा सेट बनाता हूँ, मैं आईपी लॉ की कंपनीज की डाटा निकालता हूँ, ठीक है, मैं क्रिमिनल लॉ की कंपनीज का डाटा भी निकालता हूँ, मैं ऐसी भी निकालता हूँ जो सब कुछ करती हैं, ठीक है, और मैं ऐसी भी निकालता हूँ जो कि फॉर एग्जांपल एंड कंपनीज हैं जिनको शायद लॉयर चाहिए हो, और जैसे मोहम्मद उमर भाई ने बताया कि यार ऐसी भी कंपनी है जो सर्विस से प्रोवाइड करती है, उनको भी रीच आउट। इन डाटा सेट्स को निकाल के उनसे स्पेसिफिक मैं हर डाटा सेट से स्पेसिफिक अपनी ईमेल लिखता हूँ। फॉर द आईपी लॉ फर्म्स मैं एक ईमेल लिखता हूँ, जेनेरिक वही टेम्पलेट होगा लेकिन अंदर थोड़ा आईपी लॉ का टच दे दूंगा, क्योंकि मैं स्पेशलाइज करता हूँ आईपी लॉ में, ये चीजें इस टाइप के 5-6 कस्टमर के साथ मैंने काम किया है एंड सेंड आउट द क्लास। सिमिलरली आप कहते हैं क्रिमिनल लॉ की कंपनी मैंने ये 3-4 कंपनीज की हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, just make up name. I'm on the camera just saying these things, but just saying. So you send out those blasts, you get some data, और आपको समझ में आता है कि यार पता नहीं क्या चक्कर है, मैं जब भी ईमेल भेजता हूँ ना आईपी लॉ फर्म से या क्रिमिनल लॉ में बढ़ाता है तो आपको समझ में आएगी आप प्रॉब्ली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ क्रिमिनल मतलब लॉ बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल आपको खुद अपनी नीश डिफाइन होती जाएगी एंड आफ्टर अ व्हाइल यू विल अंडरस्टैंड कि यार क्रिमिनल लॉ में ना मेरा बड़ा पक्का रिस्पांस है, इन्हीं कंपनीज के पीछे जाओ और इनसे यही बात करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोक के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा यार हम पेप्सी और फैंटा और स्प्राइट के साथ काम करते हैं, रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मे बी नेस्ले के पास जाएंगे यार मैंने वो पेरी के साथ काम किया था, तो मे बी डज नॉट रियली दैट पॉपुलर। सो आपकी नीश, इफ यू गाइस आर स्टार्टिंग ऑफ अगेन ट्राई टू ड्रीम बिग, एक्ट बिग, और वहां से आपकी नीशेस खुद डिफाइन होंगी।
For you, I think आपने कहा कि आपका एक UK में existing customer exist कर रहा है, right? वो what type of law do they implement? They're solicitors, so property, immigration. they Okay. do a few So areas. they are. So you notice ये इस आपकी एक statement से ना हमारी थोड़ी सी niche एक define हुई है. So this company does law, practices law and provides legal services to other companies. Yeah. But then there could be companies जिनको ये services चाहिए, end companies as well, right? Yes. So the benefit that I can tell you right off the bat is कि let's say आप for example एक ऐसी company के पास जाएं जिनके आगे से 50 customers हो जो जिनको वो legal services provide करते हैं versus आप एक end company को जाएं जिसमें एक law की वजह कहाँ आपको success ज़्यादा मिलेगी? ज़्यादा The जिनका probability, yeah, simple math, simple. You roll a dice, you don't get a 6. What do? Do you roll it again? You don't get a 6. You roll it again. It's a game of probability, right? Sales is exactly the same thing. Okay? There's no science beyond that. You can keep on building your niches. Again, my closing argument will always be: if you're a niche guy, talk to few people, have quality conversations. If you are a generic company trying to identify your niche, let big, खुल के खेलें, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये basically क्या नुकसान हो जाएगा? the analysis On, जी। as much as I agree with the probability, जी। और मुझे बिल्कुल समझ आ रही है the entire rationale behind it. However, हम सारों के पास भी इस तरह की ईमेलें आती हैं, कॉल आती है. मैंने नौकरी की हुई है, तो मैं I was a trainer for the banking sector, जहाँ पे हमारा काम इन बच्चों को सिखाना था कि सेल्स कॉल करो और 8 फोन बंद होते थे आपके मुंह पे, etc. Very interesting question. But the point is, how do you attract your potential client? Because even I would, if I have so many emails coming from brand sector, मैं Sure. कहूँगी अच्छा ठीक है दफा. Get off. Exactly. तो ऐसी क्या keywords आप use करते हो Right. जो उनकी attraction हो जाती है, या which then for me मैं सोचती हूँ कि नहीं, maybe you can only talk to few people and make Sure. Absolutely. You know, ये बात Fantastic है. question. And the answer to this question is एक quality आपको as an entrepreneur ना अपने अंदर build करनी पड़ेगी, वो है resilience. ठीक है? I am not that super guy जिसकी हर email में लोग oh on where were you man? We were looking for your email man. ठीक है ना? मैं if I open my inbox ना there is a lot of bad words being used in those emails and I am not shy about that. ठीक है ना? They know him. कोई problem so no problem with that. ठीक है? मैंने again बात ये है कि यार देखो आपने वो आप ग्रांट कार्ड ओन का पता है किसी को? ग्रांट कार्ड ओन you know super sales guy ना, अच्छा उसकी ना एक किसी ने वीडियो बनाई थी उसके खिलाफ एंड काइंड ऑफ उसको अप्रिशिएट भी कर कहता है यार मैं आई नो दिस गाय पर्सनली, ठीक है, ग्रांट कार्ड एंड ही इज नोन फॉर हिज फॉर्मूला 10x. जो काम कर रहे हो ना 10 गुना कर दो, यू विल बी सक्सेसफुल. जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल पे इससे कुछ सुथरा फॉर्मूला भी कोई नहीं हो सकता. whatever you're doing, you 10x that, you're going to see the impact. अच्छा वो कहता है यार मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, उठा के ना मुझे स्पैमिंग कर रहा है, कभी मैसेज, कभी कॉल, कभी ईमेल, मैं इनबॉक्स खोलता हूँ ग्रांट कार्ड ओन, मैं इधर फेसबुक पे जाता हूँ ग्रांट कार्ड ओन. तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा यार मैन आई नो यू पर्सनली एंड यू आर डूइंग दिस टू मी, why are you doing this? I'm going to unsubscribe you and I'm going to report you. Guess the answer that the guy gave. Said, go ahead. You're not buying anything anyway. That's the answer. So you get it? वो इसे कि ठीक है तू मेरे से बाय नहीं कर रहा, मेरी इंटेंशन ये है सेल करने की. If you are not my prospective buyer, go ahead and unsubscribe me. Go ahead and do that report. यार मैंने नहीं इससे बात करनी. That's fine. But if I am a sales guy, I am not here to be liked. I am here to make a sale. ठीक है ना? That's the intention. So sorry. बिल्कुल आती है. So मैं आपको numbers से ये बात point prove करता हूँ. ठीक है? मैं email marketing करता हूँ. So imagine 25,000 email blast. Do you think we get 2,500 customers per month? We don't. ठीक है? 25,000 emails. पहला आपका अगर मैं statistically बात करूँ ना, आप email blast भेजेंगी ना, आपको 90% of the emails don't open up, which is fine. 8% of the responses, the remaining 8% of the responses are negative responses. Don't reach out, unsubscribe, we're not interested, you call me again, I'm going to report you, whatnot. ठीक है? 2% of those are positive responses. उन 2% के ऊपर हमारी पूरी गेम बेस्ड होती है. उन 100 को रीच आउट किया और 2 responses ऐसे आए जिन्होंने कहा हाँ यार बात करते हैं. That is a beautiful success. What do I care about those negative responses, people that ignore me? What do I care about एक them? सवाल छोटा सा, आपकी ईमेल में क्या ऐसी कोई कुछ भी नहीं होता. ऐसे ऐसी कोई generic right. Generic. So not that generic.
So let me just complete School of that. thought भी So, देखो। oh yeah, absolutely, absolutely. So मैं आपको बात बताता हूँ कि देखें, आपने जो पर्सनलाइजेशन, जो कॉन्वर्सेशन को आपने करना है ना पर्सनलाइज के, लाइक जिस बंदे से रेलेवेंस हो. What we don't is not like a nonsense approach. We're reaching out to, let's say, legal firms and saying कि यार हम rockets बनाते हैं. We're not doing that. We do enough intelligence on a generic data set. Like जैसे मोहम्मद उमर भाई ने बात बताई, यार इतने सारे फिल्टर्स से डाटा निकाल के अब हम वो 4000 का डाटा सेट हमारे पास आ गया है. हमने उस पर रन किया कि यार मुझे पता है मैं 500 साइज की 500 एम्प्लॉइज से छोटी एम्प्लॉइज की कंपनीज पे मुझे सक्सेस जनरली मेरे एक्सपीरियंस में उनके साथ ज़्यादा है. मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि यार ज्योग्राफी वाइज कैलिफोर्निया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है. मैंने उसका डाटा निकाला. मैंने टाइटल्स भी निकाले, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग एचआर सर्विसेज, मैंने सीईओ सीएक्सओ लेवल रिसोर्सेज का डाटा निकाला एंड देन उनसे कुछ रेलेवेंट मैसेज उनको लिख कर भेजा. So it's not like we're sending out nonsense. Otherwise, it would never get us a response, right? It's not like blindfolded gun like a piece. So there is a level of intelligence involved there, and then there's a level of understanding that time is of essence. We can't waste 4 quarters targeting 15 customers and say we didn't close anything. Technically, as recruiters, हम भी ऐसे ही करते हैं. You exactly know that, right? You exactly know that. So, you tell me, why don't you call that one super guy who's exactly the fit for you? Why don't you do that? But my point is, हम personalize करते हैं. Yeah, sales है यार, क्या करें हम? You're selling to the wrong people. So you get the idea, right? You get the idea. So there will be all types of school of thoughts, there will be all types of people, but sales is a game of aggression. Sales is a game of where you have to reach out to a lot of people and hear negative feedback and toxicity, and that's fine. You hear that all the time, right? Okay, go ahead. अच्छा यदि आपने कोई पौना घंटा पहले एक बात की थी, थैंक यू सर. Welcome sir. आपने एक बात की कि मुझे इंटरव्यू की कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, हम रीच आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस माइंडसेट से निकलना है, ठीक है. सो यू आर स्टार्टिंग योर ओन थिंग, आप कैंपेन के लिए पे कर रहे हैं. सो यू जब आप जाके बात करेंगे, यू आर नॉट गोइंग एज अ रिसोर्स जिनको एक ही चाहिए. सो आप एक ब्रॉड विजन के साथ जाएंगे और डोंट कंसिडर दैट एज एन इंटरव्यू, ठीक है. इट वुड बी मोर लाइक अ रिलेशनशिप दैट यू वांट टू स्टार्ट विद दैट कंपनी. और वहाँ पे आपसे रिलेटेड भी काम आ सकता है, आपसे रिलेटेड नहीं भी हो वो भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना आप लेजर फोकस रहते हैं, ठीक है. और आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज what would be the cost effective optimal proven methodology to adapt as a consumer? ऐसी कोई चीज मिलती है जो मेरी नजर से 3.5 साल में नहीं गुजरी है. जब आपको पता लग जाए ना बाकी सब पता लग तो आप वो बताने वाला बड़ा I'm sorry मैं बात करता हूँ. जो आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी कि वो जो जहन में I mean अगर मेरे जहन में एक पैराडॉक्स बना हुआ है तो इट माइट बी पॉसिबल सब दूसरे के जहन में बना हो कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ काम, कैंपेन चलाने लगा हूँ. तो पैराडॉक्स मेरे जहन में ये था कि मैं पहले कैंपेन चलाऊँ कि मैं पहले टीम बनाऊँ. पहले कैंपेन चलाओ. वो जो आपने बताया था कि अपने 50% वाला फार्मूला. It's like hunting in the forest, right? What you're asking है कि कौन सी शाख पे ना चिड़िया कब बैठेगी, फिर मैं एग्जैक्टली एक गोली वाली बंदूक लेके ना इस चिड़िया को मारना है. तो बस मुझे ऐसे बता दें कि इधर बैठना है तो मैं इधर ही निशाना लगा के बैठा रहूँ. That doesn't happen. वो ये कह रहा है कि आप उस दरख्त को टारगेट करें जहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ बैठती हैं, नीचे पानी है और समथिंग, और कारतूस वाली बम चला दें, कारतूस वाली वो गन चला दें. उसमें कारतूस वाली गन में छर्रे होते हैं ना बहुत सारे, तो वो 100,000 छक्का जो है ना वो कुछ ना कुछ तो मारे ही मारे. हो सकता है बंदर मर जाए, वो शाम को बंदर पका लेगा, लेकिन वो एक जनरली आपको आइडिया मिल जाएगा. the alternative to be like super laser focus कि अब आप तीर कमान से उसको मार रहे हैं, एक को बता रहे you need to be a much better hunter for that exercise. और वो टाइम का और वो सब चीज़ें जो वो बता रहा है, ठीक है, सही जवाब नहीं है और डिटेल चाहिए इसमें, ये बातें सारी ठीक हैं. अच्छा जी, सो आपका क्वेश्चन था डेटा सेट. सो आई एग्री विद व्हाट ऑन सेड. आप जो है एटलीस्ट 1000 का डेटा सेट हो डिफरेंट सेगमेंट्स. तो वो डेटा सेट पे कह रहे थे कि आप एक जगह पे वो डेटा सेट चलाएं, दूसरी जो है
एक डिफरेंट डेटा सेट जो सा है उसको डिफरेंट अप्रोच के साथ जाए, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, ठीक है। सो उन सेगमेंट्स के साथ डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोर्स। पैसा जो सा है, सो प्रोजेक्ट आपने लेना है, ये चिड़ियाँ जो होती हैं सर्दियाँ आती हैं तो उड़ के इधर आ जाती हैं, गर्मियाँ आती हैं तो चली जाती हैं, क्यों जाती हैं? दे फॉलो द फूड, ठीक है। सो यू ईदर गो आफ्टर ग्रोथ, उसके लिए आपको रिसर्च चाहिए होगी, और यू गो आफ्टर द मनी, ठीक है। और एक बड़ी प्रूफ की एग्जाम्पल देता हूँ, ये साइकिल पे लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनकी भी बिक जाती है, और एक जो दुकान लगा के बेचता है उसकी भी बिक जाती है, रेडी पे भी बिक जाती है, और जलाल से भी बिक जाती है। आपको 10 रुपए की भी चाय की मिल जाएगी और 1000 रुपए की भी मिलेगी। तो आपका सेगमेंट क्या है, आपकी एक्सपर्टीज कहाँ पे है? अ गुड स्टोरी वुड गिव यू दैट एज कि आप जाके बात करेंगे तो उनको लगेगा कि यार वाह वाह बात है, ठीक है। तो वो अच्छी स्टोरी आपके पास हो बताने के लिए, एवरीबडी लाइक स्टोरीज, so I mean that's I think would be a good approach. So and the second part of your question was which method would be more preferable, right in terms of right emailing out on calls? so back to the first example कि चिड़ियाँ जो होती हैं, so what you're trying to sell वो लोग कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो है मेंटल वेलनेस कॉर्पोरेट को बेचना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट्स कहाँ पे जाते हैं? वो फेसबुक पे नहीं आएंगे, ठीक है। लिंक्डइन, मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक अराउंड 50% वो लिंक्डइन उनके बंजर पड़ेगा, ठीक है, अनलेस कि बहुत ही प्रोग्रेसिव और बड़ी उनको किसी ऐसी मोड में है जहाँ पे वो ग्रोथ में है। सो देन व्हाट वुड बी, और फिर आपको छोटी कंपनी चाहिए तो वो या आपको 1 पर्सन कंपनी चाहिए तो वो आपको डिस्कॉर्ड वगैरह पे और उस तरह की साइट पे वो डिफरेंट कमेंट्स वगैरह डाल रहे हो क्योंकि बस टाइम। एंड देन डिसीजन मेकर्स, सो यू आपने पिछले कभी डिसीजन मेकर की बात की थी, वो डिसीजन मेकर जो छोटी कंपनी होगी उसका सीईओ उठ के चाय भी बना रहा होगा, ठीक है, उसका सीईओ जो सा है वो टीम को भी देख रहा होगा, 5 बंदों की कंपनी है, जब वो 1000 बंदों की कंपनी होगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ नीचे आएगी, उसके मुताबिक आपको पिवट करना पड़ेगा, ठीक है। सो एक तरीका तो ये है कि मैं उस पूरी कंपनी को 1000 बंदा है तो मैं 1000 के 1000 को ईमेल भेज दूँ, उनमें से मुझे 3-4 भी अगर ब्लॉक कर देंगे ना तो मेरी डोमेन जो सी है आती आ जाएगी। बट देर आर वेज अराउंड इट, नॉट सेइंग कि इट्स अ बैड अप्रोच, बट देर आर वेज अराउंड इट। ब्रूट फोर्स सेल्स, बट वो जो चिड़ियाँ पूरी मरेंगी पीछे गुरखाम में भी गोली बाज सकती so but it's an approach. अच्छा, मेरा इसमें एक एडिशनल ये क्वेश्चन है, सो मेरा व्हाट आई प्लीज टेल मी इफ आई वाज, मेरा जो सोच थी उसमें गलत थी। सो आई थॉट कि आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो व्हाट आई थॉट वाज कि मैं कोई 20-50 कॉलेज ईमेल करके उनका फीडबैक लेके और उस फीडबैक को अपनी पिच के अंदर या अपने मॉडल के अंदर उसको कंसिडर करके और फिर एक पिवट करूंगा और फिर नेक्स्ट 50 को कॉल करूंगा। सो दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जो श्रिंक होते हैं ना, जो कॉर्पोरेट श्रिंक्स होते हैं, उनको किसी को कॉल करके उन्हें किस तरह की सर्विस चाहिए मुझे, वो आपको पूरी की पूरी पिच सुना देगा आपकी, वो क्या होनी चाहिए, फिर दूसरे को करे, तीसरे को करे, उसके बीच में कोई अच्छी सी फुल लगा के वो अपनी बना दें, ठीक है। दैट कुड बी अ स्टार्ट। सो उससे आपको पता लग जाएगा कि व्हाट सेल्स। So you would agree with कि अगर मैं 50 या 25 कॉल करके और फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर शॉर्टकट बता दो, आपको दो को फोन दो-तीन को फोन करने को मुझे सर्विस चाहिए कंज्यूमर बन जाए ना, कंज्यूमर बन वो जाए, सारा कुछ खुद ही बता देंगे आप। ओके। अगर मैं इसको वो सप्लाई साइड और डिमांड साइड में स्प्लिट कर देना तो इट बिकम्स इजीियर टू अंडरस्टैंड। हम सारे सप्लाई साइड पे बैठे हैं, हम सारे सप्लायर्स, उधर डिमांड साइड क्या चाहती है, व्हाट इज इट डिमांडिंग, हु इज डिमांडिंग दैट, आपकी सर्विसेज इधर कौन चाहता है। So one quick tip अगर आपको इधर इसी कमरे में बैठ के अगर सॉरी मैं हाँ, sure, कि हसन ने आपकी सर्विसेज डिमांड की, इरफान ने, उमर ने, उमर यूबीटी ये इन्होंने डिमांड की, और किसने की, फिलहाल ही इज द so that is an indicator, ठीक है। मीडियम साइज्ड कंपनी, ठीक है, के सीईओ ने आपकी सर्विस डिमांड, so that is telling as to what the demand side requires.
So that leads you into other Yeah, similar yeah, type of yeah. stuff that would be required by on the demand Yes, side. yes. तो Similar demand side, demographics. हाँ, और demand side को अगर हम अलग से एनालाइज कर रहे हैं और वही वो ये एक स्नाइपर और एक स्टेन गन ओनर के जो डिफरेंसेस आएंगे वो उसी में वाजे होना शुरू होंगे. हम सारे सप्लायर्स ही रहेंगे. The majority of the ideas that were portrayed were from the suppliers side. कि supplier ये करेगा, supplier वो करेगा. Demand की छोटी सी है बीच में कि अच्छा कितना कंपनी का साइज होना चाहिए, कौन होना चाहिए, लेकिन डिमांड कौन कर रहा है. विद इन द कंपनी भी कौन कर सकता है और इस कंपनी में कौन ऐसा बनेगा जो उमर की तरह आपकी सर्विसेज डिमांड करेंगे. Actually, it's interesting that you were speaking about supply and demand because I was thinking about it slightly differently in the sense that I don't consider myself either a supplier or part of the demand. I'm somewhere in between because I will hire people who will ultimately be creating the supply and demand obviously will exist in the overseas market. What you're saying is you are a supplier to your client. Sure. But my question was कि when we're creating this segmentation of who to approach and how to approach them and all of this, should we prioritize supply in Pakistan? So, for instance, if I use my own example, यहाँ पाकिस्तान के अंदर UK के University of London की बहुत सारे graduates हैं, but there's not a lot of American law graduates, there's not a lot of Australian or other countries. But the US market is big, and at the same time, Umar ने भी mention किया था कि your team essentially is one of the most important things that any company will look at. So that kind of leaves us in a I don't understand what thing I should prioritize. Should I go after the American market, knowing that it's the biggest market, it's 10 times anything, but I could potentially face issues when I'm scaling. See, right? I think you're looking at it very myopically, in the sense that you've already assumed कि वो आपसे US market वाला जो काम करवाएगा ना उसके लिए US local law knowledge जरूरी है. You'll find that a lot of BPO work is very benign and mundane. But it might be just administrative कि यार ये punch कर दो यहाँ और ये देख लो यहाँ, so that's not like US related. Wouldn't you say that as a person who is trying to get an outsourcing service like this for the first time, they will look कि यार इस बंदे ने तो American law कभी पढ़ा ही नहीं है, maybe I should go. No, but maybe it But doesn't just need to that thing. second him, considering कि मेरा भी law background है, even HR में भी labor laws में कुछ होता है. आप लोगों की जो IT services है ना, they are more generic in terms. Law में and HR में भी this is also something I had in mind होता है because law में तो आपको अपने अगर area के नहीं चीजें पता तो there will be some kind of there are hindrance. varying degrees of specialization you can target. इसमें कोई शक नहीं है. And in an ideal world you would target the most specialized possible. You would say कि मैं तो जनाब barrister level US tax law in Florida का माहिर हूँ. You could be that specific. But then you find nothing, and you will take one step back and generalize, and then take one step back and generalize, and maybe वो कहाँ जाके वो equilibrium में आएगा. Look at your competition. Look at India. Are they selling, Florida insurance law? No. Or are they selling general purpose legal administrative services? Target that. I think the best thing is to study the competitor. वो जो कर रहे हैं वर्क तो कर रहा होगा ना. अच्छा मैं टू योर मैं एक्चुअली आपसे स्टार्ट भी की थी ना, वैसे क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था कि मैं ये जो यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही मेरा एग्जैक्टली पॉइंट था कि क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उस कंट्री का लॉ है, राइट, यूएस लॉ कुड बी आई थिंक वुड बी वेरी डिफरेंट देन यूके लॉ, आई डोंट नो. सो आपको कुछ एरियाज तो ऐसे होंगे जिनके साथ आप प्रॉब्ली उनको सर्व नहीं कर सकेंगे जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द नॉलेज और यू आर नॉट ऑथराइज्ड और व्हाटएवर द ब्लॉकर इज, राइट. मैं यही समझना चाह रहा था कि जो अभी आपने यूके में कस्टमर पकड़ा है, चाहे वर्ड ऑफ माउथ से पकड़ा है, जहाँ से भी आया हो कस्टमर, वो किस किस्म की आपको एग्जैक्टली टेल मी द नेचर ऑफ दोस सर्विसेज, क्योंकि दैट वी नो वर्क्स, राइट, कि वो ऑफशोर होता है काम और आप वो करते हैं, तो उसी टाइप का काम पकड़े ना, वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है. Yeah, so basically in the UK there's a system of barristers and solicitors. Okay. Barristers do the court work, they're the higher level of lawyers. Solicitors have more process driven tasks that they do. And we all know that lawyers in the UK, the US, they get paid handsomely, right? Comparatively at least. So I think that something that's attracted our client to us is that
we provide a similar quality of service with a similar kind of education at maybe 1/100th of the price, right? Absolutely. So we are, that's what we've been trying to reach out to. But I'm now thinking, after this discussion, really, okay, maybe going after the big fish is the, it's not something that I should restrict myself from. क्या हो जाएगा? No I think the hyper specialized जो services है ना पाकिस्तान में, you will always be constrained in your supply. आप नया लड़का कितनी देर में train करेंगे? It's always a challenge. Like if you look at us in IT, we make most of our money with really benign, mundane stuff. बिल्कुल आप सोचते हैं इसको मैंने मार्का नहीं मारा हमने, but we make most of our money with that. There is the occasional sort of excellent thing that comes in that's really difficult. Sometimes you need that to punch through. But once you go through, you don't want to get into the uber difficult stuff that is making your life difficult. Right, because there's limitations either way, right? अगर supply की limitation है, तो अगर आप छोटी market में जा रहे हैं, तो I suppose demand की भी एक limitation है, right? You can only get a certain chunk of a small pie. Absolutely. Demand in the US? Well, let's say, if I go after the UK market, because of supply concerns, then at some point I might, scaling up, face demand concerns, right? I would suggest you put all this in perspective of numbers. It's very easy to be theoretical and intellectual about these things. Yeah. UK की छोटी market है, आप उस पे ना जाएं is general advice. छोटी मार्केट इतनी छोटी नहीं है कि आपका और आपके अगले 10 साल का एम्बिशन पूरा ना कर सके. दो यूके की लॉ फर्म्स कैन गेट यू सेट फॉर द नेक्स्ट 10 years for a 100% company and you'll be making a shitload of money. That said, मैं अगर आपको ऐसे general feeling John you research TV वो कह रहे थे कि मतलब जैसे कि अभी हम लोग एसीसी वाले भी यूके से ही पढ़े होते हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज देता है. लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब वहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं यूएसए में, क्योंकि यूके की मार्केट एक्सेसिबल बहुत सारे लोगों को हो गई है, तो उस वजह से वहाँ पे डिमांड और पाकिस्तान में सप्लायर और इंडिया में सप्लायर्स की ज़्यादा. मेरी एक एप्रीहेंशन है बिकॉज़ आई नो कि तुमने बैचलर्स यहाँ से यूके वाला किया हुआ है, मास्टर्स तुमने अमेरिका से किया है. So did it not help you to go target UK market because the laws that you studied in University of London वाली चीज़ was very similar? मेरी ये apprehension इसलिए because even with HR manual अगर हम सेट करना चाहते हैं, it has to be country specific. तो मैं पाकिस्तान में बनाती हूँ, it is very much specific to the laws and the general norms etc. practice in this country. But UK America में उनकी particular countries के हिसाब से आपको चीजें policy set करनी है. So did it obviously help you because you were familiar with this? Well, I don't have a point of reference because I've only worked with UK firms. Did it help you with your initial knowledge? Can I discourage from this conversation a little bit? देखिए मेरी सजेशन आपको ये दोनों को कि आप कोई नई मार्केट इजाद नहीं करने जा रहे. आप जो करने लगे हैं, आप किसी कमोडिटी को पकड़ें. कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है 75,000 कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी, इसका मतलब उसका काम है. अब आपने डिफरेंशिएट करना है. आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर है कॉस्ट का, ठीक है. सो यू कैन बीट एवरीबडी इन द यूके, यू कैन बीट देम एट प्राइस, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑलवेज हेल्प्स. अच्छा भाई, ठीक है. Don't overthink Understood. Yeah, I think you get into your education will drive you into things that are intellectually difficult and stimulating. But आप ये ज़हन में रखें कि आप यहाँ कंपनी बनाने आए हैं, अपनी वो चीज़ पूरी करने नहीं आए. नहीं, of course, but it's also about prioritization. कि it's not कि 10 सालों में मैं पूरी UK की market is not enough for me or anything like that. It's just about the decisions I'm making right now, I want to make the most profitable decision possible for my company, right? So it's a little bit just about just get going and survive for 5 years and everything else will there is no perfect. Faisal was mentioning, I think you started from US. I did my master's. So you do you have also have like work authorization there? I don't have one. You don't have one. Okay. By the way, अगर आप वैसे थोड़ा सा हमने कल्चर को टच नहीं किया, अगर आप वैसे कल्चर की बात करें ना, कंपेयर यूएस कल्चर, द विलिंगनेस एंड ओपननेस टू वर्क विद एक्सटर्नल कंपनीज एंड ऑफशोर टीम्स एंड व्हाट नॉट, you'll find way better responses from US as compared to UK, and then comes Europe, and then comes probably Gulf and Australia. अगर आप इनको prioritize करें ना, US is super okay with outsourcing, very familiar, they'll come and go, and they make decisions quick.
very fast decision making. मेरा हार्ट स्टॉप होगा सो हाँ So, मैं आपको बस एक आई विल लीव यू दिस रिकमेंडेशन, अगर आपने बहुत ओवर थिंक नहीं करना है इसको, जो आप करते हैं उसी की कंसल्टिंग फर्म ढूंढें, वहाँ पे जाके कहें कि मैं वही करता हूँ जो तुम करते हो, मैं थोड़ा सस्ता कर दूँगा और मैं हूँ तुम्हारी इतना कॉम्पिटेंट. If you can make that story, that will be the easiest way for you to get started, because वो they understand you well. खासतौर पे अगर आपकी एजुकेशन और डिग्रीज वगैरह उनकी जैसी हैं, तो that's a pass through the gate. Right? The only thing that will remain is कि वो you need to get a hearing. उस बात को सुन लेना. हो सकता है साल में, सारे साल में कई टाइम पे वो उसके कान बंद है. Be persistent for a year. और दूसरा ये मेरी आपको एडवाइस है कि a lot of this conversation is veering into the direction कि जहाँ आपको अब खुद करना है, ईमेलें भेजनी है, आपको खुद एक एक चीज़ उसकी डिस्कस करनी है. आप put yourself in the position of a founder who is looking for a co-founder for your journey. अगर आप वो खुद करने की कोशिश करेंगे, आपने नहीं करना. आपसे 500 छोड़ें, आपसे दिन में 10 ईमेल नहीं भेजी जाएंगी. So tie up with somebody. आपकी इनपुट ये होगी उसको कि आप उसको जनरल डायरेक्शन दे रहे हैं कि यार ये वाला सेगमेंट्स ना पोटेंशियली अच्छे हैं, तो ये मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. आप अपनी सप्लाई साइड देखिए, अपनी कंस्ट्रेंट्स देखिए, उसको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं. वो आपको बताएगा मार्केट्स को देख के कि क्या आइडियाज अच्छे हैं. फाइंड द ओवरलैप एंड गो इन एज अ टीम रादर देन ट्राइंग टू फिगर दिस आउट योरसेल्फ. इट्स ऑलमोस्ट अ गारंटी. अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं. एक आधी और भी हैं जो आज नहीं आए. Find your union and Karlin. I can't tell you how many times we've had this conversation. We had a session like this exactly 1 year ago, which I sent you in the email. You can listen to it. जेजी तब भी बैठा हुआ था ऐसे. आजकल लेकिन ज़्यादा ही कर रहा है वैसे. क्या है कुछ करता है. तो करने पे ध्यान दें. मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कि आप शुरू कर लेते हैं and then you figure it out as you go. There is no booklet जिसमें आपको पता चल जाए कि आइडियल ये था, फिर मैं आइडियली करूँगा तो कामयाब होगा. It's mostly about getting started and trying to survive for the first few years and then you get the hang of it. So paralegal services एक इत्तेफाक हुआ था कि यूके में लॉयर से हुआ पड़ा था. मेरा ख्याल 475 pounds per hour लेते थे वो, और अगर फ़ोन पे बात करते हैं 10 मिनट तो हाफ एन आवर डेलीगेट टू समथिंग 250 से ऊपर वो चार्ज कर लेते थे. और पैरालीगल उनके जो थे वो ये चार्ज करते थे पैरालीगल का. सो जस्ट इमेजिन कि आपको यहाँ पे $3 से भी सस्ता बंदा बंदी, बल्कि इससे भी सस्ता डॉलर माशाल्लाह सब बोलते हैं कि रिस्पॉन्स. तो पाउंड की बात कर रहा हूँ मैं. पाउंड उससे भी कर रहा हूँ. सो देयर इज अ ह्यूज गैप, lot of money to be made. You just have to convince कि you are as good as him. ठीक है. और आप you can multiply, you can set up teams, how quickly you can do that, और क्या facilities हैं, और उनका data कितना secure रहेगा, और आप उनको कितनी visibility दे सकते हैं, you know, on a day to day क्या चीज़ें हैं. And that's all they want. और अगर आपको लगे ना कि you're not sure, आपने वहाँ काम तो नहीं किया, तो पता नहीं वहाँ काम चलता कैसे है, find the Pakistanis there. थोड़े बहुत होंगे 10, 20, 100, 50. They will have a soft spot. I definitely had this apprehension before we started working with the UK firm. ये immigration वाली साइड में ना बहुत बंदे हैं पाकिस्तानी. मेरी पाकिस्तानी से बात हुई, 40 साल से वो पाकिस्तानी आया हुआ. मैं क्या सोचना, मैं बच्चा हूँ तो चक्कर हुआ थे यहाँ मैं कोई इशारे में, लेकिन इतना से आने को मुझे ही दूसरी कॉल पे मुझे गुस्सा चढ़ रहा था. मैंने सोचा इतने उनसे अपने हंसिब होते हैं, बट अच्छे भी होते हैं. लेकिन अमेरिका की बहुत अच्छी मार्केट है. पीपल looking for little contracts कि घर का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, नया रेंट लेना है, उसको भी I wanted to get it over to a lawyer to read through it, let me know what's up. उसमें कोई लॉज वगैरह नहीं जाते. लेक्सेट नेक्सस की वो ले ले मेंबरशिप, दिस इज ऑल यू नीड. और कुछ नहीं चाहिए. Uma has done some research on this. आपको पता नहीं याद है कि नहीं. इसमें हमने सारी लीगल कंपनियों के ना बाय सब्जेक्ट नंबर निकाले. आपने शायद में से शेयर भी किया था.
By तो वहाँ से subject? आपको segmentation By subject? What does that mean? By subject? इट मीन्स के इंश्योरेंस लॉ वाली कंपनियाँ कितनी हैं और क्रिमिनल लॉ वाली कितनी हैं और फलाने अच्छा वाली अच्छा कितनी हैं। अच्छा That gives us ओके an idea. कैटेगरी वाइज आप That gives us an idea कि ओवरऑल मार्केट में सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। राइट वो फिर ये वही ग्रुपिंग कर लेते हैं, उसमें कहते हैं कि ये वाला हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। Right. उसमें से फिर इन्होंने फिल्टर करते करते the idea was they come up with some segments. I think they've done a lot of that thinking. They've gotten the first customer through word of mouth. The problem is scaling that. Scaling that. Of course. So they just need to pick a segment, fire off, try again, reverse, fire off, and obviously they need somebody to pair up with in that journey because it's not going to happen. It's not a one-time exercise. It's something constantly करनी पड़ती है आपको. और hopefully you get enough of these कि आप overwhelmed महसूस करेंगे या delivery side पे ही बंदे नहीं मिल रहे. That's the ideal situation, right? Yeah. We're hoping to be overwhelmed. good problems to have. It's not pleasant. I tell you, you may like that, but वो जो especially अगर आपने sales का बंदा let's say पैसों पे रखा है, you will not like to be overwhelmed because you'll be like कि इतने पैसे खर्च के ये आया है और ये मुझसे अब हो नहीं रहा. This is the worst possible feeling. IT में अगर हम वैसे बात करें ना अभी मेरे ख्याल में ये चैलेंज हमें ये अब रिवर्स हुआ है काम बेतहाश है और वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इक्विलिब्रियम में रखना ही ऐसे हो कि आपके बंदे बेंच पे बैठे काम नहीं आ रहा और ना ऐसे हो कि काम बहुत ज्यादा आ रहा लेकिन बंदे अवेलेबल नहीं है Well, if you had to choose between these two, sure. The good problem is having a sale. The good problem is having sales ताकि काम and not being able to fulfill it. हाँ देखे ना बात ये कि Depends if you can afford that. ये तो नहीं हम कह रहे वही I mean it's so ये नहीं हम कह रहे कि not so when you face a problem in business the whole rationality is ऐसा नहीं होगा कोई टाइम आएगा बिजनेस में कि आपको प्रॉब्लम ही कोई नहीं आता प्रॉब्लम की नेचर बदलती है so प्रॉब्लम तो आता है बट द गुड प्रॉब्लम इज कि नाउ यू फिगर्ड आउट अ सेल्स सिस्टम जहाँ से आपको प्रिडिक्टेबली हर महीने इतनी लीड्स आ जाती हैं जिसमें आप 33% भी क्लोज करते हो तो यू आर क्लोजिंग अराउंड $50,000 $100,000 फॉर एग्जांपल अब आपको ये प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना ये आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देगी कि यार मैं 4 बंदे बेंच पे अपने हायर कर लेता हूँ ताकि अगले क्वार्टर में मैं अपने रेवेन्यू को स्केल कर सकूं बट इफ इट वाज रिवर्स कि बंदे बेंच पे बैठे टेंशन है क्या काम वो हॉरिबल सिचुएशन सो दैट्स a good problem to have कि your money coming in and now you're looking to just in step 2 problem predictability point when we talked about the big picture of all this I joined like 5 minutes later so we talked about कि पाकिस्तान में इस वक्त चैलेंज ये है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है अदर BPO सर्विसेज दिस इज व्हाई वी आर एनकरेजिंग दैट और the reason I think we're trying to recommend people other than IT is because we feel like IT has choked. You can see in this room there are no IT people left. Everybody is gone because sorry. As a trainer, everybody is gone because they have enough. And this is something of general interest for them, but वो उसका project है अभी उसकी मीटिंग शुरू हुई है आधे घंटे में वहाँ से उसने पैसे कमा लिए हैं और दिस इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज मे बी वी आर फोर्सिंग हिम टू लेकिन पाकिस्तान स्केल आउट नहीं कर सकता टू 100 बिलियन एक्सपोर्ट विद जस्ट आईटी impossible and more precisely services is the way to go about it products भी नहीं है services is the way right oh that is quickly कोई आपको interest all you need is internet हो laptop हो AC लगा I'm good to provide any type of virtually search चाहे HR है legal है BPO एक वो document है 5 to 10 sir मैं I have a hard stop as well but yeah thank you so much everybody nice meeting a lot of new faces और बाकी thank you इनकी contact information email में है जी you can reach out to him is Mohammed Aman and if you guys need to want to pair up everybody is on that sure absolutely and thank you so much for having me here wonderful thank you तो can you वो जो है ना am I as part of Allied या external मैं I'm interested in that research specifically ना वो जो आपने की है मुझे वो thank you there's a document called the path to 10K उसमें वो पूरी प्रॉब्लम ऐसी होती है when you're going from paid to freelance your first challenge is just having enough work for yourself and so things like this will help you figure that out but that transitions very very quickly if one of these campaigns is successful you go from having not enough for just you to having for 3 एक ही कस्टमर आएगा था मुझे एक नहीं 3 बंदे चाहिए now suddenly your problems become how do I survive to how do I scale and 90% of the people we have here struggle because they are so used to doing everything themselves they don't figure कि अब इसको मैंने सिखाना कैसे है at scale
लाइक यू सेड कि मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ, तो मैं यहाँ किस तरह बनाऊँ उस तरह के लड़के, तो UCL का पढ़ा हुआ जो है उसको मैं हाउ डू आई रैंप हिम अप क्विकली to one of these. This is where Fahad Bhai can help you. He had training at Allied and he kind of systematizes these things and he can give you some advice कि आप इसको so dumb it down. Some parts you can scale. How do you एक तो training का that's obviously concerned, but I think I was just going off what you said about the team, and I guess like when you're presenting that team, इस चीज से शायद फर्क पड़े कि if you're educated in the same country, maybe not, I mean it's worth looking into. देखिए मैंने जो आपको एडवाइस की ना वो ये थी कि आप अपनी जैसी एक कंसल्टिंग फर्म ढूंढ लें, तो उस केस में आपको ये कि जो एंड कस्टमर है ना उससे तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, तो अब आपने दरमियान वाले को सेटिस्फाई करना है ना, फिर देसी है ये अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत रैंप अप है तो वहाँ अकोमोडेशन की ना एक्सटेंट बढ़ जाती है बट रेट गिर जाता है, दैट्स ओके, rate is not an issue initially, definitely not an issue. You just get settled in, get growing. आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये एक लाइन ऑफ बिजनेस एक करियर बन सकता है. अभी तो ये प्रॉब्लम है ना आप लोगों के प्रोफेशन में कि ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ये भी एक प्रोफेशन बन सकता है. So at the very least we hope that you guys will pass this along and tell your communities कि यार ये this can be a profession. Once we've made it. Tell them anyway, सारे तबलीगी जो आते हैं ना घर पे वो भी तो अच्छे मुसलमान हैं. So about 3-4 weeks ago, we were trying to schedule a meeting with one of our friends. So वो एक law firm में project करने गया था, और उसने वहाँ से एक project पकड़ा, और वो project अब 80 resources उनके उस कंपनी 250-300 टोटल 250 के. अच्छा. उस कंपनी के पास उसके पास 80 रिसोर्सेज, और फिर उन्हीं के रेफरेंसेस से और फिर थोड़ी बहुत यानी कि वो सेल नहीं कर पाया, उसके पास 300-350 बंदा है. उसका मैंने ऑफिस देखा, हमारे से 200 गुना बेहतर ऑफिस, हालांकि हमारा भी ऑफिस माड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज, और उसने पूरी प्रेजेंटेशन मुझे दी है, बिठाया, गपशप की है, इट वाज वंडरफुल, क्योंकि उनके स्टेप बाय स्टेप किस तरह लेके चले हैं ट्रेनिंग्स, जो बंदे उन्होंने मार्केट से पकड़ने, किस प्रोफाइल के बंदे पकड़ने हैं, व्हाट इज द मस्ट हैव क्वालिटी, ठीक है, वो IQ हाई IQ वाले अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, उन्होंने कहा हम किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हमें दे दें, हम अपना रॉ मटेरियल तैयार कर देंगे, और दे प्रोवाइड लाइक 50 डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, और बैक एंड पे वही चीज़ चाहिए, ठीक है ना. तो अगर एक ऑफिस असिस्टेंट है और एक ईमेल्स रिस्पॉन्ड करने वाला कोई असिस्टेंट चाहिए, तो एक ही बंदे से 10-15 किस्म के वो काम करवा लेते हैं. उनके डिफरेंट वर्क बेंचेज हैं, उनकी फिर एक हायरार्की है, ऊपर एक BPO मैनेजर है, और फिर डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं, उनके मैनेजर्स हैं, फिर सब मैनेजर्स हैं, फिर लीड्स हैं, और बड़ा ही सिंपल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है. फिर उनकी जो जब कस्टमर डोमेन ट्रांसफर कर रहा होता है उनको, उसकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग्स बनी हुई, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वो एक जो है लूज लिंक जो होगा आपका कस्टमर आपको कॉस्ट कर देगा, ठीक है. सो वो प्रॉपर हो, वेरी इंपॉर्टेंट. और मतलब है कि 25 साल हो गए मुझे IT में, बट जितना थॉरली मैंने जितना करीब से उनसे मिलने के बाद मुझे आइडिया हुआ ना ये BPO वाली चीज़, I never thought about so many things जो के पास मिली, ठीक है. लेकिन वही बात है कि जब इस दश्त में जाएंगे तो फिर पता लगेगा क्या कुछ है. बट if ever you want to start off, maybe वजह से आप मिलवा दिया जाए, maybe इस मीटिंग में बताया ना इनको, ये बिजी थे उस दिन, हमारी मीटिंग में इनवाइटेड थे ये. So कोई स्पेशलाइज्ड एरिया वो IT वो लॉ में क्या क्या करते हैं, maybe you can provide some specialized services, that would be a start. Yeah. So we can discuss that afterwards. So if I were you, मैं तो टिकट कटा के तो इंग्लैंड जाके ना मोटी लॉ फर्म से मिलूं और शाम को मैं सैर करूं, ठीक है, उनके पास जाऊं और चॉकलेट का डब्बा ले जाऊं. ट्रेन स्टेशन पे बड़ा जबरदस्त एक वो है चॉकलेट 60-70 पाउंड का आता है डब्बा, मैं ले जाऊं, गपशप करूं, कॉफी पीऊं उनके पल्ले से, and try to sell, ठीक है, और बिकी जाए. I think the biggest transition is I am a professional, I am not a sales guy. You know, I am a professional, I am not a businessman. So you don't think like a business, you don't think training and scale and sales and all that. You're like, मैं तो I want something really difficult in law
जिसे मैं निकाल लूँ और मैं अपने peers को दिखाऊँ तो वो कहें वो यार कमाल करता है. That's not a business model. So take businessman, make the pitch deck so that you know how you're going to scale it, and you'll find simple things are the best. अच्छा pitch deck पहले बनना है या co-founder or co-founder No, can no. help you make a pitch deck. No, make your pitch deck. Know what you're going to build, and then you'll know who. No, build का अगर part कर भी लें but जो financials हैं उसके you can leave that part because that's something you लेकिन need आप help क्लियर है with. कि आपने यहाँ पहुँचना है और अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ चीज़ें मिसिंग थी. पैसे चाहिए थे, सेल्स का बंदा चाहिए था, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन. pitch deck में financials वाला part है ना, for example for me that is very overwhelming. I don't know how to scale that. We can help you with that. Yeah, I think if you that's- can draft something, we can help you with that. It's no Okay. problem. So my question was that I would wouldn't that be a part of the process? Let's say कि जैसे अभी हम एक campaign की बात कर रहे हैं, wouldn't that help me to shape that pitch deck better with more realistic numbers? क्योंकि अगर मैं अभी बैठ के एक pitch deck वैसे बना रहा हूँ, तो I believe I'll be very unrealistic because I haven't even stepped in the market. We understand that. I Yeah. think most projections इस stage पे, seed stage पे बेमानी होती है. लेकिन वो एक्सरसाइज हम आपसे इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज उससे आपका अपना ज़हन क्लियर होता है. Yeah. आपका ज़हन सडनली फ्रॉम फाइंडिंग द मोस्ट इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग थिंग गोज टू समथिंग क्वांटिफाइज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू ट्राइंग टू सेल. यू नो व्हाट आई मीन? Yeah. यू कैन डू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द वर्ल्ड. उसने कहना यार लेकिन तुम रहते तो लाहौर में हो, लाहौर में तो बिजली इतनी की, तो तुम्हारी तनख्वाह तो मैं खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ाने लगा, जितना मर्जी मुश्किल हो जाए काम, जो मर्जी कर लिया. सो यू माइट एज वेल से कि यार ठीक है फिर कोई सिंपल चीज़ ही दे दे, कम अज़ कम मैं उस जैसे 10,000 बंदे ढूंढ के उससे 100 से मल्टीप्लाई तो कर लूँगा. सो don't try and detach your intellectual curiosity from it and think of it like a business man, like a business model, because at the end of it that's the only way you get to do what you like to do, is if you can make money, good money. Pitch deck definitely, I mean, certainly helps with your story. And the numbers also fit into, they need to fit into that story. Yeah. अगर वो numbers कुछ और कह रहे हैं, story कुछ और कह रही है तो pitch सबसे deck would bring it together. सबसे मुश्किल ना इसमें चीज़ होती है, उसको कहते हैं एलिवेटर पिच. सुनिए एलिवेटर पिचेस के आपका कस्टमर है, वो आपके साथ ना आप और वो एलिवेटर में इकट्ठे घुस गए. यू हैव 10 seconds before he gets off. He says, hey, how are you? क्या करते हैं? You have 10 seconds. I tell you, most people struggle to define themselves in 10 seconds because you have so many things and you want to talk about all of them and you don't care who he is and what he needs. So this process helps you really clearly articulate yourself. Like I said, it's not one thing. You try multiple things. You try this and you realize this is not it. You try this and that's not it. वो ये प्रोसेस इनके सेल्स वालों के साथ मिल के आप डिफरेंट सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, हिट करते हैं. यू रियलाइज दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट, एंड यू हैव टू बी परसिस्टेंट विद दैट years at times. But know that the pot of gold at the end of it is significant. And if it was easy, everybody would be doing it. So India में तो कर रहे हैं, like he says, well, you can shortcut these things by just hailing the other guy's pitch, right? Your competitor's pitch, don't overthink it. But you have to add your special sauce. Chalo, idea was just to connect everybody and. Thank you for this, Maggie. I think it was really helpful for me specifically. Very useful. So thank you for organizing this and that. Patties? Yes. Of course. यार हमारे लिए सक्सेस ये भाई कि आप निकलें, आप कुछ अपना बनाएं और आप फिर आगे लोगों में और कुछ नहीं तो तरगीब जरूर करें. This is the only way we're going to get out of this mess. Yeah. True. नहीं तो फिर इमिग्रेशन करा लो सारे और बाहर चले जाओ. Yeah. तो हमारे पास